Check, check, hello, check. बोलो जरा बैठ जाए. Chief guest has already come. We request everyone to please be seated. Our chief guest has arrived and he will be here any moment. Requesting everyone to kindly please put your mobile phones on the silent or the vibration mode, please. सभी से निवेदन करते हैं कि अपने मोबाइल फोन्स को प्लीज आप साइलेंट मोड पे कर लें so as to maintain the sanctity and decorum of this meeting. Ladies and gentlemen, a very good morning. We're about to begin in a few seconds. Our chief guest has arrived and he will be here any moment. Thank you.
Ladies and gentlemen, may we request everyone to please maintain silence. एक बहुत सुंदर कविता की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं, उनके साथ शुरुआत करते हैं कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद करीब आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर. A very very good morning everyone. I am Juhi Malhotra and today once again I have the pleasure of being your host. On behalf of APDI, we welcome everyone to Annual National Conference 2021 with a lot of positivity and hope of learning from each other and taking home important takeaways today. Here we begin our day. Seated on the dais is our chairman, and may I request our chief guest, Shri Karnail Singh, IPS, former Director, Enforcement Directorate, to please join us on the dais. Zordar taaliyon ke saath Abhinandan. We request Shri C. Pal Singh Ji, former IG and DG of CAPSI and APDI, to please join us on the dais. Once again, please put your hands together, everyone, as we welcome our dignitaries for taking their places on the dais. Shri Mahesh Sharma, Secretary General, APDI, बहुत-बहुत स्वागत. Shri Ajit Singh, General Secretary, APDI, may we request you to join us on the dais. And Shri R. Jagdeva, President, Delhi Chapter. बहुत-बहुत स्वागत. Once again, as a host, we welcome Shri R. Jagdeva, President, Delhi Chapter. बहुत-बहुत स्वागत. General Sanjay Soi, may we request you to please join us on the dais, as requested by our chairman. जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन. A very, very warm welcome to our esteemed panel seated on the dais. Ladies and gentlemen, we would be welcoming our chief guest by presenting him with a bouquet of flowers. Ladies and gentlemen, we request our chairman, Shri Kumar Vikram Singh Ji, to please present a bouquet of flowers to our chief guest, Shri Karnail Singh Ji. Ladies and gentlemen, please put your hands together for a formal welcome of our chief guest today. And may I also request Secretary General Shri Mahesh Sharma to welcome Shri C. Pal Singh Ji with a bouquet of flowers. Once again, a round of applause. हमारे देश की परंपरा है किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हमेशा ईश्वर के नमन के साथ हम करते हैं. लैंप लाइटिंग के साथ अब हम शुरुआत करना चाहेंगे और निवेदन करते हैं हमारे चीफ गेस्ट और अन्य सभी जो गणमान्य अतिथि विराजमान हैं, कृपया लैंप लाइटिंग के साथ दीप प्रज्वलन के साथ आज के दिन की शुभ शुरुआत करते हैं. Ladies and gentlemen, it is time for us to light the auspicious lamp as we get ready to begin the proceedings of this day formally. We have a few speakers who are joining us virtually from different parts of the country and abroad. We look forward to a wonderful day, which is going to be very productive and informative, as well as a day की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, धरती से आकाश की ओर. We seek the blessings of the Almighty. Ladies and gentlemen, for the welcome address, सबसे पहले, first and foremost, may I please invite our chairman, Kumar Vikram Singh Ji, to please join us and address the August House today, welcoming Kumar Vikram Singh Ji, our chairman. Ladies and gentlemen, put your hands together for a very, very dynamic chairman who's full of a lot of ideas और जिनकी leadership में बहुत तरक्की की है APDI ने. बहुत बहुत स्वागत सर. आदरणीय श्री कर्नल सिंह जी,
former Director, Enforcement Directors, Government of India, Shri Sipal Singh ji, former IGP and Honorary DG of APDI, Shri Mahesh Sharma ji, APDI के राष्ट्रीय महामंत्री, श्री अजीत सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी, जनरल संजय सोई जी, is the CEO of both organizations, and RS जगदेव जी, दिल्ली प्रदेश APDI के अध्यक्ष, विराजमान सभी साथियों, बहनों, भाइयों, सालाना दिन है हमारा और ये 16वां साल है। 16 साल हो गए कि लगातार हम अपने ये दो संगठन जो है कैप्सिए और APDI, उसके सारे लोग आके मिलते हैं, संगठन की बातें होती हैं, आगे कैसे बढ़ना है, पीछे क्या क्या हुआ है, जिसको लेखा जोखा बोलते हैं, उसका चर्चा होती है। और कुछ सालों से APDI का अलग हो गया और कैप्सी का अलग हो गया। रियलाइज किया गया कि जो APDI की जो इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं कैप्सी के जो बड़ा समुंदर है उसमें 2-3 सब्जेक्ट ऐसे ही आ जाते थे, तो APDI के लोग बोलते थे नहीं जी हमें तो कम समय मिलता है। तो हालांकि मैं हर साल बोलता था, अभी सिक्योरिटी भी इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, लेकिन इनकी जो संतुष्टि नहीं होती थी साथियों की, तो फिर हमने इसको थोड़ा सा अलग किया था और उससे काफी संगठन को बल मिलता भी नजर आ रहा है। और पहले नहीं पता लगता था कि किसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट हो रही है APDI में, अब ये भी पता लगने लगा है कि कौन कितना काम कर रहा है, संगठनों में कितनी एक जान भरने वाले लोग हैं या जिनको पुश करने की जरूरत है, ये भी एक हमें देखने को मिल रहा है। साथियों, जहां तक ये APDI की जो प्रोग्रेस का मामला है, वो तो श्री महेश शर्मा जी थोड़ी सी बातें कहेंगे अपने में और बताएंगे कि क्या प्रोग्रेस हुई है, कहाँ कहाँ हम लोग आगे बढ़े हैं। लेकिन जो ओवरऑल जो मैं एक आपको सिनारियो बताना चाहता हूँ कि जिस ढंग से इस प्रोफेशन का विकास हुआ है, जिस ढंग से ये प्रोफेशन बड़ा है और जिस ढंग से ये तरक्की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कर रहा है, ये बहुत बड़ी अद्भुत बात है कि स्टडी का विषय है भी किस ढंग से पूरी दुनिया में जो प्रोफेशन ऑफ इंटेलिजेंस है, प्रोफेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसके कितने कितने अलग अलग डोमेन्स बने। एक समय था जब मेरे जैसे व्यक्ति ने इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू किया तो सिंपल एक मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन से हम लोगों ने शुरू किया था। उन दिनों में लोग हम पे हंसा करते थे कि आप जासूस हैं और उसकी मजाक भी उड़ा करते थे। पिक्चर आएगी, 2 जासूस आई थी पिक्चर, तो उसमें प्राण था और साथ में अशोक कुमार थे। तो मेरे पास भी मेरे साथ में कैप्टन गुरु होते थे, हम दोनों ऑलमोस्ट वो टोपियां लगा के वो पहन के उसका स्वरूप बनाते थे कि जासूस उसी से पहचाने जाते थे। और मैं तो उन दिनों में अपने हाथ में पाइप भी रखता था शेरलॉक होम जेम्स बॉन्ड बनने के लिए, वो इमेज बताने के लिए भी देखो जासूस ऐसे होते, और उसी ढंग से हमें उन्होंने मानना भी शुरू कर दिया था। लेकिन ये निरंतर जो संघर्ष चला है, किस ढंग से हम लोगों ने, जो इस देश के 5-7 लोग थे जिन्होंने सारा काम शुरू किया था इंडिया में, और वो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट धुरंधर लोग बने, उनकी कंपनियां देश में बड़ी मशहूर हुई हैं, दुनिया में भी मशहूर हुई हैं। यहाँ तक कि हम लोग की जो मेहनत हुई है, जिस ढंग से हमने इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाया है, हमारे इंडिया के जो सबसे जो एक इम्पोर्टेंट मिस्टर हेनरी बाबा हुआ करते, शायद आप लोगों को पता ना, बॉम्बे में से लिटिल मोर सर्विसेज थी उनकी, वो कितने साल पहले WAD के फ्रांस में जाके अध्यक्ष बन गए थे, जो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव के, ये मुझे सन याद नहीं है, लेकिन हेनरी बाबा आज से 50 साल पहले, शायद 50 साल पहले, वो दुनिया के सबसे बड़ा संगठन जो है, जो 1925 में बना था, उसके वो जाके अध्यक्ष बन गए। ये तो खूबी होगी हेनरी बाबा की। बाद में हेनरी बाबा ने किताबें भी लिखी जासूसी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं वो जो इंडिया का दबदबा था, जहाँ इनकी नॉलेज थी, जो इनका
काम करने का ढंग था उसको प्रमाणित किया, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया भी एक इंडिया के लोग किस ढंग से काम करते हैं। दूसरी बात, वो चीज चलती गई और समय आया जैसे मेरे जैसा व्यक्ति भी उसी संगठन का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। ये बहुत बड़ी बात थी हमारे इंडियन के लिए कि कैसे उन्होंने मुझे किस प्रोसेस के साथ उन्होंने चुना। WAD में अध्यक्ष बनना कोई छोटी बात नहीं है, वहां आपको मेंबर बनना पड़ता, कई साल रहना पड़ता, फिर डायरेक्टर का चुनाव होता, डायरेक्टर रहना पड़ता, फिर जाके उनका 3rd वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता। लगातार इतने चुनाव इंडिया में नहीं होते जितने WAD में होते हैं। तो वो प्रोसेस है कि दुनिया के सबसे अच्छे धुरंधर जो इन्वेस्टिगेटर हैं, जो वर्ल्ड के बड़े इन्वेस्टिगेटर हैं, वो अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं पहली सीढ़ी से लेके अंतिम तक। तो वो सौभाग्य हमें इस चीज का प्राप्त हुआ और फिर इंडिया के लोगों का तो दबदबा हो गया WAD में। इसमें आज महेश शर्मा जी भी वहां पे डायरेक्टर हैं, हमारे इंडिया के RP चौहान जी है, वो 2nd वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, अगले अध्यक्ष बनने वाले वही हैं। कहने का मतलब है कि जिस लगन के साथ, जिस अपनी सूझबूझ के साथ हम लोग अपना काम करते हैं, वो इतने यंत्रों का इस्तेमाल भी नहीं करते। ये आपकी बुद्धि है जिसकी जो आप लगाते हो और आप केसेस सॉल्व करते हो, उसमें आपको दुनिया में आपका एक बहुत बड़ा नाम बना पड़ा है और इसमें तरक्की होती जा रही है। फिर जो और चीजें, ये तो पैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन या दूसरी ऐसी चलती गई, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद तो जो कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस का जो दौर चला है, जो आपका लिटिगेशन सपोर्ट का जो दौर चला है, ड्यू डिलिजेंस का चला है, फाइनेंशियल फ्रॉड का चला है, साइबर फ्रॉड का चला। आज बैठे हमारे पास कर्नल सिंह जी जो इसी में आपको बताएंगे। लेकिन इन सारे क्षेत्रों में इंडिया में बहुत तरक्की हुई है। भारत सरकार इसको मानती है कि आप लोगों का बड़ा काम है, इसलिए उन्होंने 2007 में, शायद आई थिंक 2007 में, प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी रेगुलेशन एक्ट पेश किया था और वो इस सारे प्रोफेशन को उन्होंने प्रबंधन इसका करने के लिए वो एक्ट पेश हुआ था। और एक्ट के ऊपर कहीं ना कहीं जो मुझे कहने में कोई परेशानी नहीं है, कुछ देश विदेश की जो 4-5 अकाउंटिंग फर्म्स थी जो जो जहां अकाउंट्स काम करने की आई हैं, वो ही इस फील्ड में घुस गई और उन्होंने ही इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा हिस्सा उन्होंने लेना शुरू कर दिया। भारत सरकार की जो मल्टीनेशनल कंपनी वही उनको ही अच्छा मानती थी। नाम तो उनके बड़े थे, लेकिन उसमें काम करने वाले कौन थे? वो इंडियन ही लोग थे। वो इंडिया के CBI के, IB के, आपके फाइनेंशियल सर्विसेज के लोग थे जिनको वो हायर करते थे। उन कंपनियों ने मिलके उस एक्ट को पास नहीं होने दिया। 13 साल तक एक एक्ट पार्लियामेंट के ठंडे वस्त्र में पड़ा रहा। हम लगातार संघर्ष करते रहे। हमारे साथ VM पंडित जी थे, सुभाष बदावन थे, C. पाल सिंह जी थे। लगातार हम उसके ऊपर पूरा जोर लगाया। ये नहीं सरकार मानती नहीं थी, सरकार कहती बड़ी बात है, एक कमेटी बना देती थी, हाई पावर्ड कमेटी, दूसरी कमेटी, तीसरी कमेटी। हम उनके पास जाते, उनको बताते भी ये बात है, आपने फॉरेन की जो कंपनियां हैं वो नहीं होने दे रही। अरे कौन कौन सी कंपनी होने नहीं देती? अरे भैया आपको पता सारा कौन नहीं होने दे रही। जहां पे तो एक एक्ट पार्लियामेंट के अंदर कुछ स्वार्थी व्यक्तियों ने आप लोगों की प्रोग्रेस को रोकने के लिए, आपकी जो इनकम को रोकने के लिए और आपको अपना कुली बनाने के लिए, अब वो कुली इसलिए कि काम वो लेते और आके काम देते अपने श्री मुकेश जी को देते या दूसरे लोगों को देते। काम हम करते तो हम उनके कुली बन गए। पैसा वो कमाते थे और हमें सिर्फ थोड़े से पैसे दे के लेते। तो बार बार सरकार को इसके बारे में कहा गया। होम मिनिस्टर जी इसको खूब समझते थे, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ा। उनकी लॉबी बड़ी स्ट्रांग थी, आज भी स्ट्रांग आपको बताऊंगा। उनका जो प्रभाव है, आदि गवर्नमेंट तो KPMG की रिपोर्ट पे चलती, कोई डिलाइट पे चलती, उन्हीं से रिपोर्टें लिखाते हैं। जैसे जहां लोग नहीं है, रिपोर्टें लिखने वाले कौन है? वही इंडियंस है वहां पे। तो ये कहीं ना कहीं जो एक प्रॉब्लम हमारे प्रोफेशन में, एक ब्लॉक पड़ा है, वो सुधारने की जरूरत है। मेरी कोई 15-20 दिन पहले होम जो गृह मंत्री हैं, MOS हैं, श्री निशित प्रमाणिक जी, उन्होंने हमारी मीटिंग जिससे मैं और जनरल साहब गए थे, तो उन्होंने बिल्कुल कैटेगरी बता दिया कि देखिए आपका जो एक्ट है वो हमने वापस ले लिया था पिछले अप्रैल को पार्लियामेंट से, क्योंकि 13 साल हो गए थे। को 13 साल में काफी चेंजेस आई समाज में। मैं कहा जी कोई नहीं आई है, आपने उसको हटाना था, एक्ट हटा दिया, क्या चेंज आई इन्वेस्टिगेशन में? तो कहते नहीं जी रूल्स में, रूल्स सारे अच्छे बने थे हमने,
जो हमने कैप्सी से भी अच्छे रूल बना के, जो कैप्सी के रूल्स में प्रॉब्लम थी वो हमने इसमें हम उसको एड्रेस किया था। कैप्सी में नेशनल लाइसेंस नहीं मिलता, लेकिन हमने जो पटारा एक्ट है उसमें नेशनल लाइसेंस की भी व्यवस्था की, और बोर्ड जो सेंट्रल बोर्ड बनाया जो कैप्सी में नहीं है, स्टेट बोर्ड बनाने की व्यवस्था थी। होम मिनिस्ट्री ने इसको सारा फाइनल किया। अब जब सब चीजें हो गई तो मंत्री जी को उन्होंने कहा, देखिए जी आप हमने मन बना लिया है, इसको हम दोबारा ला रहे हैं। ये कईयों के लिए अच्छी खबर हो सकती है, कईयों की बुरी भी खबर हो सकती है, क्योंकि अब आपको लाइसेंस बनाने की उनकी मंत्री जी के हिसाब से पूरी तैयारी है। उन्होंने कम से कम 7, 8, 10 मिनट पर इसी के ऊपर चर्चा की, प्राइवेट डिटेक्टिव के ऊपर, कि हम किस ढंग से इसको हम इन्वॉल्व करेंगे अपने इंटरनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में। और मैंने कहा ये तो पूरा ठीक बना पड़ा, आप इसको देख लीजिए, इस पर कोई त्रुटि तो है नहीं, अब आप पेश कर दोगे तो ढंग है। लेकिन फिर लॉबी का मैंने बताया कि हम लॉबी की परवाह नहीं करते। मैं चलो जी अच्छी बात है, अगर आप नहीं परवाह करोगे, ये बन जाएगा तो कोई बात नहीं। लेकिन साथियों अब समय आ गया आप लोगों को प्रोफेशनलाइज होने का। जो आपको 13 साल से हम लगातार बोल रहे थे कि आप भाई ट्रेनिंग लीजिए, आप इसके अंदर सर्टिफिकेशन लीजिए, अपने लोगों को ट्रेन कीजिए, लेकिन आप तो सारे अपने आप को सिकंदर समझते हो कि मुझे तो ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं जी, मैं तो बड़े अच्छे से केस करता हूं। लेकिन हमें पता था भाई ट्रेनिंग का एक दिन आपका सर्टिफिकेट देखा जाएगा, जिस दिन आपको लाइसेंस मिलेगा उस दिन कहेंगे भाई साहब आप किस में काम करते थे, आप सीबीआई में थे, पुलिस में थे, डिटेक्टिव की ट्रेनिंग आपने कहाँ ली? अब बोलो जी मैं तो विक्रम सिंह से ली है। विक्रम सिंह तो यूनिवर्सिटी नहीं है ना, सर्टिफिकेट देने का काम तो एक किसी ना किसी संस्था का होगा। तो संस्था को बनाने की हमने कोशिश की, हमने आपको ट्रेनिंग देने की बार बार कोशिश की है। यहाँ तक कि जो इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस वाले हैं, AAI, उनके साथ लॉन्च अपना इसने APDI ने एग्रीमेंट किया कि हम इंश्योरेंस के जो इन्वेस्टिगेटर है उसकी ट्रेनिंग हम AAI से करेंगे। जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है आपका इंश्योरेंस का, वो उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। उन्होंने पैसे खर्चे, एक बहुत बड़ी अमेरिकन ट्रेनिंग कंपनी है, आपको याद होगा बार बार इसका जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा जी आप लीजिए, क्योंकि इंश्योरेंस फ्रॉड इस देश में बहुत बड़ा है, तो कम से कम आपके पास एक सर्टिफिकेट हो जाए जिससे इसके ऊपर आपको कोई मान्यता तो प्राप्त हो कि आपके पास डिग्री कौन सी है। तो ये लगातार जो हमारा चीज चल रही है आपको ट्रेन करने की, आपको प्रोफेशनल में लाने की, और आपके बाकी लोग जो है वो ट्रेंड हों, क्योंकि समय बदल रहा है, रूल बदल रहे हैं। अब आप पीछे हम सर्वेलेंस करते थे, आप सर्वेलेंस नहीं कर सकते, आप उसमें स्टॉकिंग में आ जाते हो, आप किसी लड़की का पीछा नहीं कर सकते। अब प्राइवेसी रूल्स आ रहे हैं, आ भी चुके हैं कि आप कहेंगे ये तो प्राइवेसी है जी, अगर प्राइवेसी का वायलेशन करोगे तो आप जेल में जाओगे। ये बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये बहुत बड़ा बड़ा इश्यू बन गया है। अब प्राइवेसी को आप उल्लंघन ना करो, इसके कोई ना कोई ढंग आपको अपनाने पड़ेंगे कि नहीं। बाकी जगह तो दूसरे देशों में अगर आप फोन के ऊपर बोलते हो जी मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, अपने को खबर लेनी होती है, जहां हम फेक कर लेते हैं ना, जहां मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, बताइए जी डिटेल दीजिए। अब वहां पे ये अपराध हो गया है, आप फोन के ऊपर किसी का नाम लेके कोई सूचना इकट्ठा नहीं कर सकते, जो अभी भी हम करते रहते हैं। तो ये सारी बातें, नई चीजें जो दुनिया भर में आई हैं, उसको आपको समझने की जरूरत है। साइबर क्राइम बहुत बड़ा बन गया, साइबर फ्रॉड बहुत बड़ा, एक अरबों खरबों का फ्रॉड हो रहा है। ये कोरोना के टाइम में कितने बड़े फ्रॉड हुए हैं, आपके पास IPR के केसेस हैं। IPR इतना बड़ा एक बिजनेस बन गया है कि इस कोरोना काल में लोगों ने जितने सैनिटाइजर थे वो सब नकली बनने शुरू हो गए, खाने के पदार्थ बनने लगे, विस्की बनने लगी, दूध बनने लगा, बच्चों के प्रोडक्ट बनने लगे, जूते आते, जितनी चीजें थी। अगर कहीं दुनिया में कोरोना काल में जो कोई प्रोफेशन प्रफुल्लित हुआ है, वो सारे फेक आइटम बनाने वाले लोग थे। वो अरबों खरबों डॉलर का बिजनेस चला। और आपको बताना चाहता हूं कि ये जो फेक का सिंडिकेट चलता है दुनिया भर में, ये बहुत ही संगठित है। इट इज ए वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड थिंग। और इसका जितना पैसा इकट्ठा होता है किसी चीज का, ये देश में आतंक फैलाने के लिए होता है। ये दुनिया में प्रमाणित हो चुका है कि ये जो फेक का रैकेट चलाते हैं, क्योंकि जल्दी पैसा लोगों को मिल जाता है, फंडिंग का पता नहीं लगता, तो अरबों खरबों का रुपया आपकी देश के अंदर अशांति फैलाने के लिए, टेररिज्म फैलाने के लिए ये फेक का काम होता है, जो कोरोना में खूब हुआ। ये तो बड़े मौके से मैंने प्रधानमंत्री जी की को चिट्ठी लिख के कहा कि ये कोरोना काल में ऐसा काम होएगा। तो पुलिस तो उस वक्त तो लॉ एंड ऑर्डर में लगी थी, आपके
जो प्रोटोकॉल को फॉलो कराने में लगी थी, जितने ये कोविड के थे, तो उस वक्त पुलिस अपने और काम में लगी थी। तो तब मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे प्राइवेट डिटेक्टिव जो हैं उनको अलाउ करें कि वो जगह जगह जाके रेड करें, यहाँ गलत हो रहा है, डिटोल का बन रहा है, दुनिया नेम ए प्रोडक्ट वो सारे बने, आपके ये मास्क जो है ये इतने नकली बने, कुछ कहने की बात नहीं। तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसके इंस्ट्रक्शन दिए हर डीजीपी को, हर प्रदेश के डीजीपी को, कि अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है ऐसे रेड करने की तो उसको आप प्रेफरेंस दीजिए, प्रायोरिटी दीजिए। हुआ भी, ये मेरे संज्ञान में है भी, कितने रेड उस वक्त भी आप जैसे प्राइवेट डिटेक्टिव ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए वहां पे रेड किए और उसको सक्सेस किया। कहीं ना कहीं अखबारों में भी खूब आया कि ये चीज पकड़ी, टेलीविजन भी हमने किया कि कैसे एक सैनिटाइजर बिहार की एक छोटी सी कंपनी में हर ब्रांड का सैनिटाइजर बन रहा है और क्या उसमें तेजाब टाइप की चीज डाल रहे हैं हाथ धोने वाली। तो साथियों, ये जो जितना भी ये आपका प्रोफेशन है, इसके अंदर बड़ा स्कोप है। इसको अगर आप ढंग से आप करोगे तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। अब हम आपको प्रोफेशनलाइज करना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हो। रिसेंटली हमारी मीटिंग श्री विमल पटेल जी हैं, ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी देश की नेशनल यूनिवर्सिटी बन गई है, सरकारी यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी बनी है। अब उन्होंने कहा कि हम प्राइवेट डिटेक्टिव की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट हम देंगे, हम ट्रेनिंग देंगे। अब कितनी बड़ी बात है कि आप लोग उसमें ट्रेनिंग लेंगे या आपके बाकी लोग ट्रेनिंग लेंगे या नए नौजवान लोग इसमें आएंगे इस करने के लिए। उनको अगर एक राष्ट्रीय जो यूनिवर्सिटी है वो अपना अगर सर्टिफिकेट देती जो सब जगह मान्य होगा तो आपको आगे लाइसेंस लेने में प्रॉब्लम। लाइसेंस के लिए सर्टिफिकेट जरूरी होगा। मैं अभी आपको फिर बता रहा हूँ, इसमें लापरवाही मत कीजिए। जब ये आपके RRU के सर्टिफिकेट शुरू हो गए तो आप सबके वो तो ऑनलाइन होंगे, सारे के सारे ऑनलाइन होंगे, आपके काम में कोई अड़चन नहीं आएगी। लेकिन आप उसको जरूर करिए और करके आप जिस दिन सर्टिफिकेट हो जाए लागू हो जाएगा उस दिन आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा कि दैट आई एम ए क्वालिफाइड इन्वेस्टिगेटर, आई कैन डू दिस थिंग। इसी ढंग से और बड़े बड़े सर्टिफिकेशन है जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड के ऊपर बहुत कुछ है, ड्यू डिलिजेंस के ऊपर बहुत कुछ हो रहा है, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन, इंटरनल इंटेलिजेंस के लिए बड़ा है। तो ये जो कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस का जो एक नया आपके पास एक नया फील्ड खुला हुआ है, उसमें आपको बड़ा ही तरक्की मिलेगी, उसमें आपको बहुत ही बिजनेस मिलेगा। और आपका बिजनेस तभी होगा इफ यू आर ए नोन एज ए क्वालिफाइड इन्वेस्टिगेटर। आपकी संस्था का नाम एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल डिटेक्टिव एंड इन्वेस्टिगेटर है। प्रोफेशनल आप तब बनते हो जब आपके पास कोई ना प्रमाण हो कि यू आर ए प्रोफेशनल। तो इसलिए इसका सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो भी जल्दी अब शुरू करने जा रहे हैं। तो आपसे मेरे एक सलाह होगी कि आप इसको सारे लोग देश भर में, मैं देख रहा हूं कि बाकी स्टेट में भी काफी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं। गुजरात से मैं त्यागी जी को देख रहा हूँ, चौहान साहब जिनके बारे में बोल रहा था, RP चौहान जी जो हमारे WAD के सेकंड वाइस प्रेसिडेंट बन गए, आगे बने अध्यक्ष हैं। इन्होंने हमें, और जितने साथियों को मैं देख रहा हूँ इस सामने के ऊपर, आई कैन सी कैप्टन जोशी ऑल्सो फ्रॉम गुजरात। सो देर आर सो मेनी पीपल एट द मोमेंट। आपके भारती जी को देख रहा हूँ मैं, भारती इज ऑल्सो सिटिंग देयर। So what I'm trying to do is that the kind of network we have in India is one of the finest reliable network. आगे आप कहीं आपको कोई केस मिलता था तो आपको पता नहीं लगता था कि आप किसको गुवाहाटी में किसको बोले, आप कौन कहेगा। अब आपके पास ये पपिया आ गई है, ये लड़की जो है इसकी कंपनी है वहां की पपिया की। ऐसे हर जगह रिमोट प्लेसेस में आपके पास APDI के डिटेक्टिव हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं। देश विदेश में हम करते हैं, किसी देश का केस आता है तो हम वहां पे अपने जो काउंटर पार्ट उनको करते हैं। तो आपको जो आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं इसके ऊपर थोड़ा सा ज्ञान का आदान प्रदान होगा, आप में अवार्ड दिए जाएंगे। इस बार हमारा सौभाग्य प्राप्त था कि एक ऐसे व्यक्ति को हम अवार्ड दे रहे हैं और जिनका खुद का बेटा किडनैप हुआ, मर्डर कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने किस ढंग से उसकी पुलिस नहीं कर पाई, उनको ढूंढ पाई उस मर्डर को। तो एक जो दुखी पिता था उसकी लगन देखना कि किस लगन से उस व्यक्ति ने उस अपने उस मर्डर को, किडनैपर को पकड़ा। एक बार नहीं, दो बार पकड़ा उसको और उसको जेल पहुंचवाया। जेल पहुंचाने के बाद वो आदमी
जेल से थोड़ी देर के बाद पैरोल पे आ गया, उसने अपना फेक मर्डर कर दिया, अब करवा लिया, फिर उन्होंने उसको पकड़ा। तो इमेजिन करिए जो आम व्यक्ति जिसका जो एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर था, किस तरह अपनी अंदर की वेदना के लिए जिसका बेटा खो गया हो, उसने किस ढंग से, किस लगन के साथ उस व्यक्ति को ढूंढा, ये अद्भुत घटना है। और उसके बाद उन्होंने उस सिर्फ अपना तक ही रखा, अब वो उनके आसपास में कई बच्चे जो गुम होते हैं, किडनैप होते हैं, जो उनकी इन्वेस्टिगेशन फ्री में जाके करते हैं। कर्नल सिंह जी, ये बड़ा अजीब बात है, एक व्यक्ति जो सिविलियन था, जिसको कुछ नहीं पता, जिसका अपना बेटा मर गया, उसका मर्डर को ढूंढना, उसके बाद वो लगातार लोगों को, जहां कहीं किसी का कोई ऐसा किडनैप हो जाता, बच्चा होता, ये उनकी जाके ढूंढते हैं, सक्सेस क्या है। तो पुलिस को बड़ी मदद मिल रही है। तो ये ऐसे व्यक्ति को भी हम अवार्ड देंगे, या बड़े बड़े आज अवार्ड जो अनाउंस किए गए जाएंगे वो भी बड़े अच्छे होंगे। तो ये राष्ट्रीय दिन हमारा जो आज का दिन है, इसके अंदर हमारा अपना लेखा जोखा का, आपका फ्यूचर कैसे होगा, आपकी तरक्की कैसे होगी, आपने अपना प्रबंधन कैसे करना, उसके ऊपर चर्चा है। हमने कितना पैसा खर्चा क्या दिया, उसके ऊपर करेंगे। और फिर जो ज्ञान की बातें हैं, हमारे पास आज विदेशों से 3 लोग जुड़ने वाले हैं। उनमें से 2 लोग तो WAD के एक चेयरमैन है, वो इसमें जुड़ेंगे। डॉन रूसो एक हमारे प्रेसिडेंट इलेक्सी हैं, वो भी बीच में उसमें भी वो आएंगे। इसके अलावा आपके एलन राव जी आज हमारे जो अध्यक्ष हैं, उनको काम पड़ गया, बहुत ही जरूरी, वो चले गए, उनका भी है। हमारे बधावन साहब हैं जो प्रेसिडेंट ही सिख, तो उनका भी है। बाकी सीपाल सिंह जी के इसमें होंगे। 1-2 और लोग हैं जो इनके ऊपर अपना प्रकाश डालेंगे, आपको ज्ञान देंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। मुझे पूरा होप एंड ट्रस्ट की आप सारी बात को अच्छे ढंग से सुनेंगे, और आगे की बातों के लिए हम जैसे एक अपने संगठन को आगे बढ़ाना है, इसको और क्या इसमें चेंजेस लाने, उसको भी चर्चा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, माय प्लेजर। Thank you so much, Chairman Sir, for setting the tone for the day and for sharing such important details about what happened in the past 1 year. Our Chairman is very, very clear in his thoughts, views, and ideas, and the vision of taking the industry forward. This vision is always in his mind. We are very lucky that we have such a Chairman. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, now we will be presenting the annual report, and this will be presented by Shri Mahesh Sharma, Secretary General APDI. Very, very committed and hardworking, as we have always seen him. Let's welcome Shri Mahesh Sharma, Secretary General APDI. पर जोरदार तालियां महेश जी के लिए. Hello. Thank you. Respected our chief guest, Sri Karnal Singh IPS, our chairman Kumar Vikram Singh ji, our IG C. Paul Saab, he's a DG of APDI also, and our General Sanjay Soi, Shri Ajit ji and Shri Jagdev ji, और मेरे प्यारे साथियों. Through my report, I would like to highlight the number of initiatives taken by the APDI during 2021, and especially during the COVID season, pandemic, when India was going through a very critical period of COVID-19, and there was shortage of medicines, oxygens, supply of fake medicines, sanitizers, and food products, liquors. The APDI took up the case with the Prime Minister. We should be thankful to our chairman, Kumar Vikram Singh. He talked to the Home Minister, he talked to the Prime Minister, and they settled a committee for this, and it was implemented. And he requested that this work for fake product, our investigation is well set. I mean, they are equipped, they can do it. So we should be thankful, sir, for you that you have taken the initiative, and a lot of people have got the work also. The private investigator helped in saving many lives. Private investigators helped in checking insurance fraud also.
The midterm meeting held on 16th July in Harvard Manor was a great success. Professor Dr. Triveni Singh IPS, SP Cybercrime, UP Police participated virtually and spoke about the cybercrime investigators. He said that cybersecurity professionals are in huge demand today, as any investigation is incomplete without forensic tools. This is very important, and this is fact also. Our Shri Alan Rao, former Deputy Commissioner of Police and eminent lawyer, covered the topic of litigation support and intelligence. Intelligence and surveillance techniques were covered by Shri Mukesh Sani. He's sitting here, former Senior Superintendent of Police, CBI. Other eminent speakers covered various important topics of interest of APDI members. The webinar of on insurance fraud and investigation was held on 22nd July 2021 at 1640 hours virtually. The event was organized by Insurance Institute of India, a leading education and training provider, and is closely associated with all the segment of the insurance industry in association with the APDI. Survey reports on impact of COVID-19 pandemic was released during the webinar. That survey report was very huge and very important for the government. I must say that private detective and investigator industry worked round the clock during tough time to help the law and order machinery of respective state in checking the minions. We have made on 10th of December 2021, as chairman said, in RRU, Rashtriya Raksha University, they have already decided, settled, established one training institute for our investigators. They will give training, and that certificate, as said by chairman sir, it will be recognized by the government. It will be very authenticated and authorized, so that you can have that certificate. You must go for that training also. And finally, I would like to thanks all participants. They have come from all the states. And one thing also I want to tell you, during this pending period, sir, chairman sir, I would like to tell, more than 50 members we have added, more than 50 members, in spite of this pandemic period. So thank you very much, sir. And now I present the balance sheet also of the APDI. This is the balance sheet. आप जिसको भी देखना है, करना है, balance sheet, profit and loss account, everything is here. Still it is a profit. Okay, because so many purchases borne by the CAPC. Okay, this I want to tell you. So please propose somebody, and seconded, Ajit. No, Ajit cannot do it. Yes, anybody? Rajiv, yes, propose. Okay. Balance sheet. The balance sheet will be shared with everybody. Everybody, yes. loss है, profit है. This I have told nutshell. Nutshell में, लेकिन आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम उसको वेबसाइट पे नहीं डालते, कई लोग वेबसाइट पे डाल दो, लेकिन ये बैलेंस शीट आपकी इंस्पेक्शन के लिए, अगर आप कोई चाहेगा बैलेंस शीट भेजो, आप सेक्रेटरी जनरल को अपना मेल भेजिए, आपको बैलेंस शीट भेज दी जाएगी. टोटली ट्रांसपेरेंट है, सर्टिफाइड चार्टर अकाउंटेंट बनाकर. वैसे भी I will send this balance sheet to the chapter presidents of the states. You can take, you can share with them. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir, for presenting the report. Ladies and gentlemen, for any event to be successful, sponsors play a very, very important and indispensable role. Dear friends, our platinum sponsor for today's conference is Lancers, India's leading intelligence and security risk consulting corporation. Please take a look at the video, which will let us know more about them. So, a video on Lancers.
We thank all our sponsors. Platinum sponsor का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. Lancers, which is India's leading intelligence and security risk consulting corporation, for all the support and help that they have offered for today's annual national conference. Ladies and gentlemen, we will now take a look at this video और इसके बाद हमारे national president का address होगा. For all the support and help that they have offered for today's annual national conference. Ladies and gentlemen, we will now take a look. Thank you so much. Thank you, Lancers. जोरदार तालियां हमारे platinum sponsors के लिए. Thank you for all the support and making this conference possible in such a big manner. Ladies and gentlemen, we would now be requesting for an address by our National President APDI, Shri Subhash Vadhavanji. It'll be a video address. Kindly look at the video. Thank you for all the support and making this conference possible in such a big manner. Ladies and gentlemen, we would now be requesting for an address by our National President. Dear friends APDI, and Shri members of Subhash APDI, Vadhavanji. It'll be a video I address. sincerely welcome you Kindly to look at this the conference of Thank you for all the APDI. support and making this I am conference sorry that possible I am in not such a big personally manner. available Ladies and to gentlemen, welcome you we would now at be this requesting for an gala address fair. by our National President. Dear friends APDI, and Shri members of Subhash APDI, Vadhavanji. one thing It'll comes be a into video my address. mind that Kindly is a high look time at for the us to Thank you for all reunite the support ourselves. and making this I am conference sorry that possible I am in not such a big personally manner. available. Strengthen the Ladies and hands of gentlemen, our management, we would now be especially our requesting core for Vikram Singh an Gala address chairman. by our National President. Dear friends APDI, and Shri members of Subhash APDI, Vadhavanji. one thing Glitches, comes it'll be in a high video time address. sincerely They'll get solved and we're able to listen to our speakers who are addressing us online. Our National President APDI, Shri Subhash Vadhavan, please. Yes, sir. Ladies and gentlemen, we now have arrived at a very, very important segment where we will be presenting the awards and mementos. These are very, very important awards. कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं जिनके पीछे कुछ कहानियां छुपी हैं. कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने बहुत एग्जेम्पलरी वर्क किया है, बहुत अच्छे कार्य किए हैं अपने अपने फील्ड में. जो भी काम उन्होंने किए हैं, they have stood at the top, setting a benchmark for the others. Requesting our chief guest and our chairman sir to kindly please present these awards. हम निवेदन करते हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय से कि कृपया इन अवार्ड्स को प्रदान करने की कृपा करें. हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे अवार्ड्स के साथ, उसके बाद मोमेंटोज यहाँ पर प्रेजेंट होंगे. लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहला अवार्ड जो हम देने जा रहे हैं उसका नाम है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. Friends, this goes to Shri Mukesh Chandra Sahni, former SSP CBI, SS Legal and Verification Agency LLP. He carries 34 years of experience of CBI, wherein he had investigated a large number of high-profile cases pertaining to anti-corruption, economic offenses, wildlife, and narcotics. He had successfully unearthed
several big rings of drug racketeers, which resulted in the seizure of huge quantity of arms and ammunitions and seized huge quantity of RDX arms and ammunitions. In his recognition of good services in the CBI, he has been awarded the Indian Police Medal for Meritorious Service and the President Police Medal for Distinguished Services in the year 2006. बहुत बहुत बधाई. Once again, जोरदार तालियां श्री मुकेश चंद्र सानी के लिए. अगला अवार्ड है Best Corporate Investigator of the Year. And this will be presented to Shri Shivendra Pratap Singh from Lancers Network Limited. Shri Shivendra Pratap Singh played key role in planning and execution of many enforcement actions against counterfeiters during lockdown periods. This was done to secure the lives of citizens during most difficult times. Equipped with over 20 years of experience in providing customized risk mitigation solutions in South Asia, Shivendra is spearheading Lancers, India's leading intelligence and security risk consulting corporation. He has a master's in international security with a specialization in terrorism, insurgencies, and intelligence in South Asia from the University of Warwick, UK, and a business degree from University of Sheffield, UK. Many congratulations. We move on, and now the award for Best Detective of the Year. Ladies and gentlemen, हम चाहेंगे सब आप इस बात पर ध्यान दें, एक कहानी जो अब हम सुनाने जा रहे हैं. Best Detective of the Year award goes to Shri Suryakant Bhande Patil from Spy Sanket. एक बार जोरदार तालियां इनके लिए. Shri Suryakant is a civil contractor based out of Pune. Over the past 13 years, he has helped solve dozens of kidnapping cases for free. In 1999, Suryakant was living in Shirwal in Maharashtra when his family faced a great tragedy. His 3-year-old son, Sanket, was kidnapped from outside his school. When the police efforts fell short, he took matters into his own hands. Over the next 8 months, Suryakant helped investigate his own son's kidnapping and bring the criminal responsible to justice. He was unable to save Sanket's life, though. Following the incident, Suryakant vowed to not let this happen to anyone else. In 2009, he started his own detective agency, Spy Sanket, where he works on kidnapping cases for free. Suryakant has helped bring justice and closure to dozens of families and continues to even today. Congratulations for the award. Ladies and gentlemen, moving on, we now have the Best Young Investigation Entrepreneur of the Year. For the Best Young Investigation Entrepreneur of the Year, the award goes to Ms. Papiya Bhadra from Green Beret Enforcement and Secret Services Private Limited. Ms. Papiya belongs to Jalpaiguri in West Bengal. She is the founder director of Green Beret Enforcement and Secret Service Private Limited, having its office in Siliguri. She successfully completed number of cases in brand power protection, financial investigation, land litigation case, and classified cases. Many, many congratulations to Ms. Moving on, the next award is Investigation Entrepreneur of the Year. And this goes to Shri Devvrat Puri Goswami from Tianzu Investigation Services Private Limited. Zordar taliyan inke liye bhi. Shri Devvrat Puri Goswami is the MD and CEO of Tianzu Investigative Services Private Limited. He is the first paranormal investigator of India. Over the past few years, he has not only established the most diverse and impacting detective agencies and paranormal investigative teams, but has served his individual and corporate clients with top-notch quality and ethics of service. He was the director of Devbhoomi Advertising, and he has also worked as SIT Chief Assignment Head,
special correspondent in many news channels of India. Congratulations, Shri Devrat Puri Goswami. फिर से जोरदार तालियां. After the awards, we have a few mementos which will now be presented. For the first, which is our platinum sponsor, Lancers Network Limited. Ladies and gentlemen, let's thank our platinum sponsors. एक बार फिर से जोरदार तालियां इनके लिए. Shri Shivendra Pratap Singh is receiving this memento. Moving on to appreciation awards now. Appreciation awards now to City Intelligence Private Limited. Thank you so much for all the support. City Intelligence Private Limited, bahut bahut dhanyawad for all the support that we have been receiving. Hatfield Investigation Services Private Limited. Ladies and gentlemen, can we have a louder applause, please? Everyone, a big round of applause. Thank you for all the support. And after Hatfield, Top Shield Security Services Private Limited. Many, many thanks and many, many congratulations. Once again, a round of applause for Top Shield. We have a few other appreciation awards. Probe Intelligence Services. Probe Intelligence Services. Thank you so much for all the support we have been receiving for the conference. Drishti Network. Many, many thanks, and we must appreciate the efforts of each and everyone who have put in their hard work, given their time and energy to make this possible. Sleuths India Consultancy Private Limited. Sleuths India Consultancy Private Limited. Thank you so much, and this is a very well-deserved appreciation award. Law-abiding technology. Law-abiding technology, and after them, in the end, would be 360 degrees. So let's begin with law-abiding. Many, many thanks and many, many congratulations. A picture perfect moment as we freeze this time, this moment to be remembered for a very long while after today. 360-degree investigations. Everybody, please put your hands together. Thank you so much, our chairman, sir, and thank you, our chief guest. Ladies and gentlemen, now is the time of an address on cryptocurrency and cyber security. और इसके लिए अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे मुख्य अतिथि महोदय को. Ladies and gentlemen, please welcome Shri Karnail Singh, IPS, former Director, Enforcement Directorate, to please say a few words, and हम सभी का आज हौसला बढ़ाए जोरदार तालियों के साथ एक बार बहुत बड़ा एक मीठा सा अभिनंदन. सर, श्री कुमार विक्रम सिंह, चेयरमैन ADPI, श्री महेश शर्मा, सेक्रेटरी जनरल, श्री C. पाल सिंह, फॉर्मर IGP, जनरल संजय सिंह, श्री अजीत सिंह, श्री RS जगदेव, all the participants, eminent speakers, expert detectives and investigators, and media. At the outset, I would like to thank Kumar Vikram Singh and Mr. Ellen Rao,
who have invited me and given an opportunity to speak with you. एलन राव जो है हमारे दिल्ली पुलिस के, मेरे साथ काम किया उन्होंने, बहुत ही एज डिटेक्टिव रहे हैं बहुत सारे फील्ड में। अब वो एडवोकेट बन गए हैं। मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ कि इतना अच्छा काम किया है। कई उनके साथ क्रिमिनल्स के साथ एनकाउंटर में भी वो सक्सेसफुल रहे हैं। बहुत ही अच्छे ऑफिसर्स हैं। मैं सूर्यकांत जी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, और मतलब एक फीलिंग होती है कि किस तरह से इतना एक्यूट पेन जो इनको रहा होगा उसका सब्लिमेशन हुआ, पैशन बना उनमें दूसरों की सेवा करने का। और ये जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किडनैपिंग केसेस को सॉल्व करने में फ्री करते हैं, किसी से पैसा चार्ज नहीं करते। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इनको बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर जो अवार्ड्स दिए गए हैं डिफरेंट तरह के, लाइफ टाइम अवार्ड है और दूसरे अवार्ड है, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे ही आगे भी काम करते रहें। एक बात जो कुंवर विक्रम सिंह जी ने कही है बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस लॉ के तहत कोई भी एजेंसी कंट्रीब्यूट करती है। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं कंट्री की या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं कंट्री की, उनके लिए लॉ बना हुआ है और उस कानून के अधीन काम करते हैं। बहुत सी चीजें उसमें भी कमी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंट्री में सर्वेलेंस के ऊपर कोई लॉ नहीं है, एक्सेप्ट दी जो आप फोन इंटरसेप्ट करती हैं एजेंसीज, उसके लिए लॉ है, लेकिन इन जनरल सर्वेलेंस के लिए लॉ नहीं है, अंडर कवर ऑपरेशंस के लिए लॉ नहीं है। अगर कोई एक पुलिस ऑफिसर और इंटेलिजेंस ऑफिसर अंडर कवर ऑपरेशन करता है, ये उसका अपना रिस्क है। अगर किसी और एजेंसीज ने उसको पकड़ लिया तो मर्जी है उसको माने उसकी बात या ना माने उसकी बात। सिमिलरली आप लोग जब काम कर रहे हैं, आई एग्री विद हिम कि 13 साल एक लॉ पेंडिंग पड़ा रहा, उसको विड्रॉ हो गया और अब आपकी एसोसिएशन कोशिश कर रही है कि कानून बने। बहुत बड़ी बात है अगर कानून बनेगा, ताकि सबको पता हो कि हमारी पावर्स क्या हैं और किस फ्रेमवर्क में हमको काम करना है। ये बहुत बहुत जरूरी है। आज का जो टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी एंड साइबर सिक्योरिटी, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ये 10 मिनट में नहीं कोई बात नहीं लेकिन मैं इसको छोटे में ही कवर करूंगा। जो क्रिप्टो करेंसी की बात करें, आज को बड़ा डिबेट चल रहा है इसके ऊपर। पार्लियामेंट में भी बिल अभी इंट्रोड्यूस होना था, लेकिन पहले एक इंट्रोड्यूस हुआ था, वो विड्रॉ हो गया। नया बिल इंट्रोड्यूस होना है, अभी वो बना नहीं है। क्रिप्टो करेंसी की जो शुरुआत हुई, थिंकिंग शुरू हुई 1980s में शुरू हुई। बेसिकली हमारी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो बैंकिंग के थ्रू होती है। दैट मीन्स देयर इज ए थर्ड पार्टी। अगर मैं अपने पैसे ट्रांसफर करना चाहता हूँ और जब तक बैंक अप्रूव नहीं करेगा, मेरे पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे। तो ये सोच हुई कि भी वही थर्ड पार्टी, अगर मेरे पास पैसे हैं, जैसे मेरे पास कैश रखा हुआ है, ऐसे ही मेरे पास बैंकिंग के पैसे होने चाहिए और मैं जब चाहे जिसको मर्जी ट्रांसफर कर दूं। जिसको जैसे कैश देते हैं, तो डिजिटल कैश के ऊपर एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। डेविड शॉम थे जिन्होंने डिजी कैश एक कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन वो फेल हो गया उस समय, बिकॉज टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। उसके बाद बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए, लेकिन 2009 में एक अननोन आदमी, अननोन नहीं कहूंगा, नाम है सतोशी नाकामातो, बट हु इज ही नोबडी नोज, उसने एक पेपर दिया कि बिटकॉइंस कैसे बनने चाहिए। और ये पेपर पूरी चीजों को सॉल्व करता था जो पुराने टाइम में सॉल्व नहीं हो पाती। एक नई टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ, उस टेक्नोलॉजी से जो है ये पॉसिबल हुआ कि बिटकॉइंस बने। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें? पहली बात, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? अभी तक जो कॉन्सेप्ट है, अनलेस द गवर्नमेंट कम्स आउट
कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन के बारे में मैं बताता हूँ, आपको शायद पता हो। ये ट्रांजैक्शंस हुई, 10 आदमियों ने 20 आदमियों ने 10 मिनट तक जो ट्रांजैक्शन की वो सारी इकट्ठी हो जाती हैं, और जितने भी लोग दुनिया में जो माइनिंग करने वाले बोलते हैं उनको, वो उनको क्लब करते हैं, ट्रांजैक्शन को क्लब करके उनका एक हैश बनाते हैं। हैश का मतलब है कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, जैसे MD5 चेक सम है या दूसरे हैं, तो वो कितना भी लंबा हम उनको टेक्स्ट देते हैं, वो 120 बिट में या 160 बिट में उसको कन्वर्ट कर देता है, तो उसका हैश बनाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हैश एक पर्टिकुलर टाइप का होना चाहिए, उसमें 4 जीरो होनी चाहिए पहले। तो जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसमें 4 जीरो नहीं आएंगी उसका जब हैश बनाएंगे, तो कहते हैं अच्छा एक नंबर को गैस करो। इस नंबर को गैस करके उस नंबर को साथ में लगा दिया और फिर उसका हैश बनाया। हैश उस 4 पहली जीरो आई या नहीं आई, तो इस तरह से उस नंबर को गैस करते हैं। एंड दैट इज ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वो से कि मैथमेटिक्स स्पेंड करती है अपनी एनर्जी। तो जो आदमी सबसे पहले ऐसा नंबर गैस कर लेता है जिससे हैश उस लिमिट में आ जाए जिसको कहते हैं आना चाहिए, तो उसको राइट मिल जाता है कि इस जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसको अप्रूव करें। और उसको क्या मिलता है इतनी कैलकुलेशन करने का? उसको बिटकॉइन मिलती है। सो देयर इज ए इंसेंटिव मैकेनिज्म, देयर इज ए प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क इज आपने वो सही गैस किया, और इंसेंटिव मैकेनिज्म क्या हुआ कि आपको बिटकॉइन मिल गई उसके बदले। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है इसका। और जो ट्रांजैक्शन की, वो एक आदमी ने दूसरे आदमी से ट्रांजैक्शन की, ट्रांजैक्शन करने वाले का नाम नहीं है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन को वो पब्लिक की और प्राइवेट की यूज करेगा, यानी प्राइवेट की से उसको अपने लॉक करेगा एंड पब्लिक की वुड बी अवेलेबल। तो हर ट्रांजैक्शन के पहले पब्लिक की होगी। सो हमें केवल पब्लिक की मालूम है, दैट ए ने बी को ट्रांसफर किया, हु इज ए हु इज बी, नोबडी नोज। सारी ट्रांजैक्शंस अवेलेबल हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। आप कंप्यूटर पे बैठ के देख सकते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शंस कब हुई, लेकिन किसके बीच में हुई किसी को नहीं मालूम। और ये ट्रांजैक्शंस कहाँ हुई, क्रिप्टो करेंसी कहाँ स्टोर्ड है, नो बॉर्डर्स। यानी मैं यहां बैठ के किसी को ट्रांसफर कर रहा हूं क्रिप्टो करेंसी, द पर्सन मे बी स्टेइंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो क्या मैं करेंसी ट्रांसफर कर सकता हूं इंडिया से दूसरी कंट्री में? तो उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आ जाता है, फॉरेन एक्सचेंज लॉज आ जाते हैं। बिना ऑथोराइज्ड एजेंट के कोई भी करेंसी बाहर ट्रांसफर नहीं हो सकती या बाहर से इंडिया में नहीं आ सकती। तो पहला कंसर्न जो है गवर्नमेंट का है कि क्रिप्टो करेंसी प्रॉब्लम क्रिएट करती है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में। दूसरा इशू जो है इन्वेस्टिगेशन, आप सब लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हाउ टू फाइंड आउट कि ये ट्रांजैक्शंस कहाँ से हुई, किसने करी। तो जब तक आपको ये नहीं पता हो ये पब्लिक की किस आदमी की है, आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते। ये दूसरी समस्या है ट्रेसेबिलिटी की, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने है। अभी कुछ केसेस हुए थे हैदराबाद में, उत्तरांचल में, चाइनीज कंपनी के लोग बैक पे थे उस पर। some of that cryptocurrency has gone to the terrorist organizations. Now how they come to know that terrorist organizations? Because international agencies ne through social media checking, internet checking, ये पता करा कि ये particular public addresses terrorist agencies के हैं। अदरवाइज कोई तरीका नहीं है उसको पता करने का। एक कॉन्सेप्ट ये भी आ रहा है, जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस लग रहे हैं, वो एक्सचेंजेस हर आदमी का रिकॉर्ड रखें कि ये पब्लिक एड्रेस किसके पास है, रजिस्टर कराएं। बट थिंकिंग चल रही है कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी नहीं है।
ये करेंसी है भी या नहीं, दैट इज अनदर क्वेश्चन। क्या ये कमोडिटी है, और क्या केवल ये समथिंग इन अवर माइंड एंड इट डजंट एग्जिस्ट, उस पर भी डिबेट है। इन सारे इश्यूज को देखते हुए गवर्नमेंट थिंक कर रही है कि इसको किस फॉर्म में लाया जाए। कुछ कंट्रीज हैं वो इसको रेगुलेट कर रही हैं, कुछ कंट्रीज कह रहे हैं कि नहीं हम अपनी खुद की करेंसी यूज करेंगे। नाउ सपोज कर लो किसी ने किडनैप कर लिया किसी को, नाउ दे मे आस्क रैंसम इन वर्चुअल करेंसीज, हाउ विल यू ट्रेस इट? तो पुलिस has thinking how to do it, and large number of people are investing in cryptocurrency. अभी लास्ट वीक जो है, मेरे से एक ने पूछा कि सर ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? मैंने कहा क्यों क्यों पूछ रहे हो इसके बारे में? तो कहता है कि मेरा दोस्त है वो कह रहा था कि चलो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, तो दोनों मिलकर करते हैं, तो मुझे समझ नहीं आया तो मैंने इन्वेस्ट नहीं करा। तो कहता मेरे फ्रेंड ने 2.5 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से और उसकी क्रिप्टो करेंसी खरीद ली। वो फिर बढ़ते बढ़ते 54 लाख की होगी, पर अब 18 लाख में नीचे आ गई तो उसने बेच दी, उसको लॉस हो गया। तो मैंने कहा उसको प्रॉफिट में लॉस हो गया। बट ये इंडिकेट ये करता है कि लोग बैंक से लोन लेके भी क्रिप्टो करेंसी में लगा रहे हैं, बिकॉज एक वैल्यू है कि इसके रेट बढ़ रहे हैं, चाहे ये एग्जिस्ट करती है या नहीं एग्जिस्ट करती है। और इसलिए गवर्नमेंट को इस पर काफी थिंकिंग कर रही है कि इसको कौन किस तरह किस फॉर्म में लाए। क्या अपनी कोई क्रिप्टो करेंसी इशू करे गवर्नमेंट, या जो एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसीज हैं वर्ल्ड में उनको रेगुलेट करे, तो उसके बारे में भी थिंकिंग चल रही है। इसमें क्या हुआ, आरबीआई ने 2013 में एक सर्कुलर लाई थी, आरबीआई 24 दिसंबर 2013 को। उनके कंसर्न क्या थे कि इसमें कोई रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है। सपोज कर लो आपका पासवर्ड खो गया आपके वॉलेट का, then there is no mechanism to find out your money is lost forever. Secondly, हाई वॉलेटिलिटी है, डिपेंडिंग करेगा कौन सी कंट्री क्या लॉ ला रही है, क्या हो रहा है, ये कभी ऊपर चला जाएगा कभी नीचे चला जाएगा। एंड इलीगल एक्टिविटीज की पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे मैंने बता रहा था कि इलीगल एक्टिविटीज हो सकती हैं। एक डार्क वेब है, आप सबको मालूम है। नाउ हाउ डज डार्क वेब वर्क्स? इट वर्क्स ऑन ऑनियन राउटिंग। व्हाट इज ऑनियन राउटिंग? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सपोज कर लो आप लोग इन्वेस्टिगेटर हैं, आपने कहा कि ये ईमेल कहाँ से आया है, तो उसके लिए आप देखते हैं इसका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस क्या है। आईपी एड्रेस यूनिकली पर्टिकुलर टाइम में अलॉट होता है, तो आपको उससे फोन नंबर मिल जाएगा, आप ट्रेस कर लेंगे। नाउ देयर आर सर्टेन एनोमाइजर्स, रशिया में है, डिफरेंट कंट्रीज में, आप उस पर जाइए, तो व्हाट दे विल डू इज आपका आईपी एड्रेस पील कर देंगे and put new IP address. Then you go to the third country, इसको भी पील करा दीजिए, एक और IP एड्रेस लग गया। You go to the fourth country, तो ये 7-8 लेयर्स की एक चेन बन जाती है। अब आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू करा, आपने देखा IP एड्रेस कहाँ का है, रशिया का है, आप रशिया गए, वो कॉपरेट करे या ना करे, पहली बात। सेकेंडली, हाउ डू यू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉरेन कंट्री? लेटर रोगेटरी आपको इशू कराना पड़ेगा कोर्ट के थ्रू। रशिया वाले कहते हैं ये आईपी एड्रेस फलानी कंट्री का है, हमें तो आप 7 लेयर में 7 कंट्री में घूमते रहेंगे एंड आपका इन्वेस्टिगेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जो डार्क वेब है उसमें क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा चलती है, और वहाँ हर चीज़ मिलती है, जो आप वेपन ले लो, ड्रग्स ले लो, हर चीज़ फ्री में मिलती है। एंड ट्रेसेबिलिटी इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। 2013 या 14 में अमेरिका ने एक पर्टिकुलर सिल्वर मार्केट को क्रैक किया था डार्क वेब पे, बट वो टेक्नोलॉजी से नहीं किया था, वो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू इंटेलिजेंस कलेक्ट करके किया था उन लोगों ने। तो ये भी एक डिफिकल्टी आ रही है क्रिप्टो करेंसी से। मनी लॉन्ड्रिंग की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्रिप्टो करेंसी में।
इसको यूज करके मनी लॉन्ड्रिंग करके अपने पैसे को कहीं से कहीं भेजा जा सकता है। टेरर फाइनेंसिंग की पॉसिबिलिटीज है। तो इस इशू पे उन्होंने सर्कुलर निकाला, रिपीट किया। फिर 6 अप्रैल 2018 को उन्होंने प्रोहिबिशन कर दिया। इसके अगेंस्ट इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू आर रेगुलेटर, यू आर नॉट द पॉलिसी मेकर, एंड देयरफॉर यू कैन नॉट मेक पॉलिसी। आरबीआई को, because RBI is a regulator, not a policy maker. Policy maker is a government. Now the government has to take a call how far they should allow cryptocurrency to be used. And there is a thinking going on in government, there is a churning going on, and they'll come out shortly with certain law which can be implemented in the country. Briefly, I will touch upon cyber crime और साइबर सिक्योरिटी। आपका काम बहुत बढ़ने वाला है, बहुत सारी चीज आ रही है नई नई। पहली बात तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ सोशल मीडिया। फेक न्यूज है, हेट न्यूज है, आप कुछ भी पढ़ लो। अभी मैं पढ़ रहा था उस पर कल कि नीरव मोदी ने स्टेटमेंट दिया है, उसको भगाया गया है इतने पैसे लेकर, 200 करोड़ लेकर। फिर मैंने चेक किया, पता लगा है फेक न्यूज थी। अगर आप चेक ना करें तो आपके मन में एक ओपिनियन बन जाएगा। दैट इज वन एरिया कि हाउ टू काउंटर फेक न्यूज, हाउ टू काउंटर हेट न्यूज। IIT कानपुर ने एक प्रोजेक्ट दिया था ड्यूरिंग कोविड की कोई गलत सूचना देता है उसको कैसे काउंटर करें, लेकिन इन जनरल कोई सॉल्यूशंस नहीं है। कुछ कंपनीज ने, कुछ नेटवर्क्स ने बनाए हुए हैं कि वो बताते हैं कि ये न्यूज़ हेट न्यूज़ है या गलत न्यूज़ है। इसी तरह से अगर हम सोशल मीडिया का सिस्टम देखें, इनके सॉफ्टवेयर हैं, वो देखते हैं उनका बेसिक पर्पस क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मीडिया में इन्वॉल्व करना। जैसे फेसबुक है, वो चाहेगी कि आप फेसबुक पे लगे रहो। ट्विटर कहेगा आप ट्विटर पे देखते रहो। इंस्टाग्राम है, वो कहेगा इंस्टाग्राम पे आप आते रहो। तो उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं कि व्हाट इज योर पर्सनैलिटी, व्हाट डू यू वांट टू सी ऑन इंटरनेट, एंड दे प्रोजेक्ट ओनली दैट इंफॉर्मेशन टू यू। So they assess your personality, they assess your thoughts with these softwares. Suppose you have a thinking that this particular act is wrong, any particular act, you will get all those information which says this particular act is wrong. But if you are thinking that this particular act is right, you will get only that information which says this particular act is right. So you get biased. And this media is used for opinion making. Can be used by anybody, can be used by terrorists, can be used by criminals, can be used by politicians. The opinion making is very, very important, because opinion is truer than the facts itself. What do you feel is right is right. Then I talked about cryptocurrency, darknet. Internet of things are coming in big way. Now, what is Internet of Things? The appliances connected to internet. Suppose you have fridge at home, it is connected to internet. You have heater, you have AC connected to internet. सपोज कर लो एक आदमी अपने घर में चलता है एंड ही गिव्स अ मैसेज कि मैं घर में आ रहा हूँ, 10 मिनट बाद में बात लूंगा, मेरा पानी गर्म कर देना. Now this all be done in the future. Now somebody hacks into this system and makes it a boiling water, and you jump into your tub and all burnt. This is a possibility in future. In hospitals, medicines are given on computer. Everything, doctor writes on computer, then nurse gives this. Somebody hacks into the system and change the medicines. So the cyber area will be having a lot of challenges in future. Then we have interconnected databases. As we are progressing, various databases
of critical infrastructure will be connected. Now, one incident happened in Australia, Queensland, long back. One engineer was sacked. This engineer has handled their computer systems. So they have computerized system for handling water service and handling sewage service. He connected water with sewage with water. And lot of problem came, you are getting the wrong water. All these things are possible and interconnected. And we are going to smart cities. 100 smart cities would be coming in India. और उन स्मार्ट सिटीज में क्या होगा, जितनी भी वो हैं सिस्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल सीसीटीवी सिस्टम्स हैं, डिफरेंट बिल्डिंग्स की जो एंट्री सिस्टम है, कौन जा रहा है कौन आ रहा है, हॉस्पिटल्स का रिकॉर्ड है, कौन ट्रैवल कर रहा है वहां से बाहर, कौन ट्रैवल कर रहा है रेलवे या ट्रेन में, दैट all these little information will be on their databases in computers, and therefore chances of hacking are more, and there would be requirement of cyber security, and huge requirement of cyber security would be there. Artificial intelligence is coming. People can morph things. Even the video can be morphed. Today you see the morphed picture only, photo only. In future there will be totally video will be morphed. You can be cloned on the internet. Cloning of a person, because you are going on internet and giving everything. You are giving only even this thing on the internet कि आज मैं जा रहा हूँ शिमला घूमने, 2-4 फोटो खींच दे, चोरों को भी पता है कि आप चले गए, घर खाली पड़ा है. So we have to be careful, and the role of investigating agencies, role of the people who can understand investigation will increase. Now, the president was talking, chairman was talking about training. That is very, very important, and I'll request कि आप अपना कोई training module बनाएं and उसको आगे यूज करें. फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री में फाइनेंशियल एनालिसिस का कोई सॉफ्टवेयर नहीं. सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने अमेरिका से या यूके से खरीदा है. अदरवाइज किसी भी एजेंसी के पास कोई सिस्टम नहीं है, हमारी कंट्री में डेवलप ही नहीं हुआ. आप सोच सकते हो कि आप फाइनेंशियल एनालिसिस इन्वेस्टिगेशन का बहुत स्कोप है, और उसमें मोस्टली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी प्राइवेट लोगों के पास अप्रोच करते हैं. सो दैट इज ए एरिया फॉर यू. तो आप कर सकते हो कि फाइनेंशियल एनालिसिस का एक अपना मॉड्यूल बनाएं, उसको स्प्रेड करें, और अपने अपने छोटे छोटे मॉड्यूल बनाएं. इंटरोगेशन कैसे करना चाहिए उसका मॉड्यूल बनाएं, क्योंकि इस तरह की चीज़ों की आपको जरूरत पड़ेगी. साइबर एनालिसिस कैसे करें इसका आप अपना मॉड्यूल बनाएं, एंड दैट इज गुड. राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो है आपको हेल्प कर रही है, बट अपने मॉड्यूल बनाएं, उससे ज़्यादा फायदा होगा. थैंक यू वेरी मच. आई विल स्टॉप एट दिस. Thank you so much, sir, for sharing your thoughts, ideas, and views with all of us today. And thank you on behalf of APDI for joining us today and sparing time out of your schedule to be a part of this wonderful meeting as chief guest today. Ladies and gentlemen, after that wonderful address by Shri Karnail Singh ji, we move on, and we have with us Mr. Dan Russo, Chairman of World Association of Detectives, who is live with us. Can I please request our team to connect with him, please? Hello, thank you. Hello, everyone, and thank you for having me in your conference. It is always a pleasure to be with you. And I have some few words for you, and I want to say that
all the participants. I want to congratulate for being there, to honorable guests and speakers, and to all the ladies and gentlemen in the room and online. Like I said, it is always a pleasure, and it will always be a pleasure to be with you. And it is a great honor to address to this very special participants. I want to address many thanks to my good friend and past president of World Association of Detectives, Mr. Kumbar, for inviting me. And I'm looking so forward to see you and meet you in person again. Hope it will be soon. Now a few words about World Association of Detectives. Probably you know that it was established in 1921, so it is one of the longest and largest association of its kind in the world. And I'm happy to tell you that India is very well represented. You have a past president near you, Mr. Kumbar, like I said, and I'm sure you know that RP Chauhan is our second vice president, and in 2 years, India will have another president of the World Association of Detectives, which is really great. My congratulations to the awarded person, and I would have liked to shake direct hand with them, but maybe next year it will be possible. So congratulations to the awarded persons and the agencies. I wish you well. I want you to be safe and have success in your conference. I won't keep you too much because I saw the agenda, and you have some very interesting presentation. I saw here ethics and the private investigator, which is really interesting. And a lot of our other very skilled speakers. So I will not keep you long. Good luck and congratulations. And by the way, I want to tell you that India's ambassador in Romania is very, very much involved in our society. He did a lot of trips. He visited a lot of parts of Romania, so he is pretty much involved. And we are friends on Facebook, by the way. So that was all. Thank you. Good luck, everyone. And thank you for having me in your great conference. And congratulations for organizing. You are really an example for all the National Association of Private Investigators in the world. For me, you're great. So thank you very much and good luck. Thank you, Mr. Dan Rusu. Ladies and gentlemen, we were listening to the chairman of World Association of Detectives who was addressing us live. Thank you, Mr. Dan, once again. So we have the address by the National President APDI, which we could not play earlier. So may we request our team to kindly please present to us the message by President Shri Subhash Padhavanji. May I please request our team to play this message. Dear friends and members of APDI, I sincerely welcome you to this conference of APDI. I am sorry that I am not personally available to welcome you at this gala fair. One thing comes into my mind, that is a high time for us to reunite ourselves and strengthen the hands of the management, especially our Kumar Vikram Singh, the chairman, who is leading the organization from the front. It is high time
for the government, the need of the hour to re-enact the bill once again for the private detective legislation. When it was first introduced many years back, probably the things have changed over the years, and now there's a great need of this bill to be introduced once again with minor changes here and there. I suggest that we should all forget about the past and strengthen the hands once again. But the question is that every time we talk about what APDI has given us, you never think of what you have given to the APDI. The APDI perhaps has given you the. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, as we move on, after the message by our national president. Dear colleagues, first of all, I'd like to thank Mr. Kunvar Vikram Singh. We move on, and now the address will be presented by Mr. Alexei Solomanidin, President of World Association of Detectives. So the President will now address us, Mr. Alexei Solomanidin, please. Dear colleagues, first of all, I'd like to thank Mr. Kunvar Vikram Singh for his kind invitation to join this conference and opportunity to speak for you today. Unfortunately, COVID restrictions are still quite strong. We are still not able to move around freely as we used to do a couple of years ago. This way, we have to keep using online video format for communication, which has become already a part of our daily life. I would like to use this opportunity also to underline the importance of collaboration between the WED and the Association of Professional Detectives and Investigators. I have been lucky to be present on one of ADPI conferences held in New Delhi several years ago, and I can tell you that it was a fantastic experience. This partnership enables us to join forces of the best local and international professionals of our industry. No doubt that we will keep developing this line of cooperation and friendship further. The pandemic situation helped us to truly value our trusted net of partners throughout the world. It is vital, especially when you are not able to travel even to your neighbor country. Despite serious negative effect of COVID on economy and business, things are gradually getting lighter. To tell the truth, I wouldn't say that our industry was the top damaged one, and the world is getting back on feet. Business needs us investigators to assist them, avoiding risks. From our experience, the sphere of brand protection was significantly in demand recently. Borders restrictions caused serious difficulties for genuine products shipment. This situation motivated counterfeiters to increase their activity. For quite a while, all law enforcement agencies were focused on anti-COVID measures, control of the new regulations, compliance, and so on. Most people had to start dealing with online orders and delivery services. Altogether, these factors created ideal conditions for counterfeiters to take over the market. As a result, we're having more seizures of counterfeit and have to deal with investigations that lead from online to offline. We discussed this situation with colleagues from different countries, and it seems to be a global trend of nowadays, unfortunately. But that's actually not bad for our industry, as more work is coming. The most important is to be up to date with the current needs of the market. On behalf of the World Association of Detectives, I wish you a successful conference, and I really hope that we will be able to meet in person quite soon. Thank you. Thank you, Mr. Alexei, for sharing your views and thoughts with us today. Thank you for your message. Ladies and gentlemen, we would be now looking at a few audiovisuals by our silver sponsors, the first one being 360 Degrees. Please take a look at the screen. So may we request a video on 360 Degrees first.
Thank you, 360 degrees. The next silver sponsor, Law Abiding Technology. Please play the video. Thank you so much. Law Abiding Technology. And the final one by Probe Intelligence Services. So a final presentation by one of our silver sponsors, Probe Intelligence Services. बचपन में हम सब ने चाचा चौधरी की कॉमिक्स पढ़ी हैं। चाचा चौधरी जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। इन कॉमिक्स में तो चाचा चौधरी अपने तेज दिमाग से हर किसी की सीरत को देखते ही पहचान जाते थे। पर असल जिंदगी में चाचा चौधरी तो नहीं होते, होती हैं प्रोब इंटेलिजेंस एजेंसीज। ये वो एजेंसीज होती हैं जो कंपनीज में काम करने वाले एम्प्लॉइज के बैकग्राउंड की इन्वेस्टिगेशन करती हैं और ये पता करती हैं कि वह एम्प्लॉय आपकी कंपनी के लिए कितना रिलायबल है। इस तरह की एजेंसीज जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं उनमें शामिल है प्री एम्प्लॉयमेंट स्क्रीनिंग सर्विस, प्री एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टिगेशन सर्विस, एम्प्लॉयमेंट वेटिंग सर्विस
और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टिगेशन सर्विस। इस तरह की एजेंसी के मालिक से हम मिले RS जगदेव जी से। RS जगदेव जी घर आकर रिफ्रेश होते हैं और तैयार होने के बाद अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर ये निकल जाते हैं अपने ऑफिस के लिए। वेलकम टू द शो द बॉस, एक ऐसा शो जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ ऐसी शख्सियत से जो अपने बलबूते पर उस मुकाम तक पहुंच पाए हैं जहां पर पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। और हमारे आज के इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे ही 3 शख्सियत से मिलवाएंगे। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं सबसे पहले RS जगदेव जी से, हु इज द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ प्रोब इंटेलिजेंस। Hello everyone, my name is Mr. R.S. Jagdev. I am the Chief Coordinator of Probe Intelligence Services. For the last 39 years, since 1982, my investigations and testimony have been used in many of the most complex and demanding cases in India and abroad. In this process, my clients have won many of the nation's largest judgment and recovered huge amount of money lost through fraud, theft and employment. I am also the president of Delhi chapter of Association of Private Detectives and Investigators, India. I had also been conferred upon the Investigator of the Year award for 2016 by Mr. Kalraj Mishra, Honorable Union Minister for Micro Small Medium Enterprises. This was widely covered by the India Today in the Entrepreneur of Year award for 2017. My firm, Probe Intelligence Services, has been recognized as one of the most successful investigative agencies in India and has featured in the Labor Law Reports, HRD Updates and Human Capital Training Management, India Today, Investigation Times and many other professional business trade publications. I am affiliated with the National HRD Network, American Society of Industrial Security, Association of Private Detectives and Investigators, Labor Law Association and Association of Industries and Institutions. I would like to share my mission and I quote, use innovation and technology to consistently provide client partners with corporate undercover and special investigation services that are superior in quality and value, while ensuring they receive the highest possible return on their investment. My vision is to build a world-class organization committed to continuous growth and market dominance, in which each employee has the opportunity to enrich himself, herself, professionally and financially to the fullest extent he or she desires. I value and treat all people with respect and dignity. I believe in conducting all business with uncompromising integrity and being loyal to the organization and mission. I believe to encourage flexibility, innovation, and teamwork. Since 1982, Probe Services has been providing than 5,000 clients with tools to attract and retain an effective workforce by providing a wide range of background screening services. My company is ISO certified and APDI certified and follows the strict data privacy laws authorized under ACPI guidelines. My company currently works with 80% of the automobile and engineering companies nationwide and as preferred provider for manufacturing. We are servicing in excess of 700 active accounts that have benefited from our value-added solutions. It's been a pleasure being with you all and thank you for your patience. Thank you so much.
Thank you so much. We now have an ethics and private investigator presentation, and this will be presented by Mr. Kelly Riddle, President of Kelmar Global. May I request our team to kindly please connect with Kelly Riddle, please. Welcome. My name is Kelly Riddle, and I am honored to give this presentation. Thank you for the invitation. This is going to be a presentation on ethics and the private investigator. So hopefully you can see my screen without any complications. But let me first introduce my companies. I am the president of Kelmar Global. I had a business partner when I first started this company back in 1989 by the name of Mark. So we took the first three letters of both of our first names, Kelly and Mark, and came up with Kelmar, and that's where the company name comes from. I also am the founder of the APDI Institute of Education, online education format platform to go and get additional training. So thank you for allowing me to be here. I want to give special thanks to Jet for asking me and inviting me to present this. So you will get to know me a little bit better. I recently was received this America's Top PI of 2022 from the PI magazine. A little bit about me is I have 42 years of investigative experience. I'm the past president of the Texas Association of Licensed Investigators. I served on the board of directors for Tally, as it's known, from 2007 to 2010. I was chosen the Investigator of the Year by Tally in 2013. I also was chosen the PI of the Year by the National Association of Investigative Specialists. I was named one of the top 25 PIs of the 20th century by PI Magazine and NAIS. I received my Texas Certified Investigator designation. There's only about 50 of us in the state of Texas. And I received my board accredited investigator certification from Intellinet. I received the NALI, National Association of Licensed Investigators Editor and Publisher Award back in 2004. I'm on the advisory board for the Florida Association of Private Investigators. I'm on the board of directors for Intellinet, board of accredited investigator certification. I'm on the board of directors for NCISS. I'm a regional director for the National Association of Legal Investigators. I'm on the public relations committee for the Council of International Investigators. And I'm the founder of the Coalition of Association Leaders and the Association of Christian Investigators. I'm also the author of 14 books, and I'm the co-author of 3 others. So you can see that I'm very prolific in this industry and in this profession. And these are some of the books that I've written that deal with various topics, from surveillance to nursing home investigations to security consulting. They're all available on Amazon, by the way. So let's talk about ethics. It's a tough topic, but as children, we are taught that it's okay to tell white lies. You know, Santa Claus and the Easter Bunny and Cupid and Cinderella and the stork, all of these don't exist, but we're taught that it's okay to accept white lies. And so where does the line between white lies and ethical problems come in? We're taught that. I and my wife adopted 2 young girls when they were 8.5 months and 2 years old. They're now 18 and 16 years old. My wife and I decided from the very beginning that we were not going to tell our children anything but the truth,
because just like Santa Claus and the Easter Bunny, at some point they're going to find out that those don't exist. And if you lie to them on things of that nature, how can they trust you later on? And our bigger thought process was, what happens when they find out that they're adopted? So we never lied to them or hid the truth about us adopting them. And sure enough, about 2 years ago, they came to us and said, tell us about our biological mother and father. And so fortunately, we didn't hide that from them. And we were easily able to go through that process, and it didn't cause us any more problems than it possibly could have. So ethics are something that we've had to deal with as children and into adulthood. And the problem with ethics is integrity is an adherence to a code of value or moral soundness. Ethics is a discipline dealing with good and evil, and with moral duty, you conform to an acceptable standard. So a person of integrity follows their ethics. And so you either have them or you don't have them. Unfortunately, a lot of times as private investigators, we're put into situations where if you don't already have a core set of values, then you're compromised. And so over the years, I have seen investigators that get into trouble primarily because they don't educate their client well. And what do I mean by that? I mean is that a lot of your clients have never used a private investigator before, so they don't know what to expect. And so you need to educate your client. For us, I give my client a contract, and even after the contract, I explain to them what they should expect. Depends on what type of case it is, but we have a case management system. So I tell them that they can access the case management system, they can read some of the notes, but even so, we will generate a final report. If there's video involved, we'll give them a copy of the video. And so you explain the process, and that helps alleviate some of the complications. Where private investigators typically get into problem is because the person pushes them. They want more, they want more. They want to hack into their email. They want to hack into their telephones. You just have to educate them right up front. Tell them that those kind of things, even though you see that you can download software off of the internet, it doesn't make it right. And it is a violation of law. So part of the issue is explaining right up front what they can expect and not expect. And then don't let the client push you. So as a quick example, years ago, just at the dawning of the computer age, we had a client that came into our office, and one of my case managers interviewed the subject. And he said that his wife took him to work at 7 o'clock, dropped him off at work, and she was supposed to come pick him up at 5 o'clock. As it turns out, she didn't return and pick him up. So he caught a ride home. And when he got home, his 3-year-old son was gone, she was gone, and all of his furniture was gone. So he said, look, if my wife wants to leave me, that's okay, but I deserve to know where my 3-year-old son was. And so he asked us to try to find him. Fortunately, he didn't know the name of his sister-in-law very well. He said, I know that she's living in Austin, Texas with her sister. And so the next morning, I was getting dressed for work, and on the TV, I saw his picture. And there was a warrant and a news story about how he had gone to a neighboring town, found the mother-in-law, and shot her execution style because she would not tell where her 2 daughters were. Excuse me. In her purse was a receipt from a storage unit. So he went and broke into the storage unit, and he found the lease documents where the daughter had leased an apartment. So he went and staked out the apartment. The next morning, his wife comes out carrying their 3-year-old child. She sees him and freaks out. She takes out a gun, shoots at her husband, and misses. He took a gun, shot at her, and hit her in the head, but didn't kill her. So he grabbed the 3-year-old child and took off. Days later,
again, I'm getting ready for work, and on national TV, there is a police call to a bank in Seattle, Washington. And the police surrounded the car, and it turns out to be this same individual. And in the back seat is the 3-year-old child. And fortunately, the child was asleep because he shot and killed himself as police surrounded him. So my point in telling you that is, you do not have to take every case. We tried our best to antagonize him to see if we could provoke him. My case manager even brought the subject into my office. And after hearing the story, I said, yeah, she's probably running from you because you've been beating her up. And I tried to antagonize him, and we couldn't do that. So we took the case with good intentions, believing what our client told us. So again, it's unfortunate, but in this business, sometimes you have to dig a little deeper. You have to do a background on your own client. We've had to do that before. And so you do not have to take every case, number one. And the cases that you take, be very, very careful with, especially if it involves individuals. So I belong to 24 associations, and I'm on the legislative committee. And part of what we do is try to battle to keep our records open and transparent so that private investigators can have access to them. But there are scenarios that happen where it's hard to keep records open when there's PIs that are in the news who are blatantly breaking the law. So we see this from the top down. Many of you may recall Enron, the big company in Houston, Texas, that Ken Lay was the CEO. They had problems. They embezzled a bunch of money from their investors. And so that was a business ethical issue and a personal ethical issue on Ken Lay's part. Most of you know about Boeing. You know, they had the software problems, and they were their pilots had told them that they had software problems. So not only did it create financial losses, but it has become a reputational problem for them as well. And so they're still facing issues related to ethics. If they had done the right thing from the very beginning, pulled the planes until they resolved the issue, some of these things wouldn't have happened. In the United States, we've seen our professional sports teams where they have spied on each other, they've cheated, they've done all types of unethical scenarios. And then, you know, ethics starts at the top. And Hillary Clinton, our former first lady, you know, she's been embroiled in email issues where it says here, Hillary's email scandal will haunt her, said a House Speaker, John Boehner. Well, that has been an understatement. That was early on when they started investigating her emails, and it has not gone away. A lot of these things will never go away. It takes you a lifetime to build your reputation, and it takes you just a moment to have that destroyed. So again, regardless of which party has been in office, Clinton got impeached. You know, he said, I did not have sexual relations with that woman, but then later on had to recant that. Our current president, Biden, and his son have been embroiled in corruption-related issues related to China, and you know, our former president, Trump, he was impeached. So these things start from the very top and they flow down. And so as a business owner, if you don't set the standard for your ethics, both in your personal life and in your business, then you're setting your business up for issues. So early on, when I was in high school, I played basketball, and then I went to the university on a basketball scholarship. But I remember way back in my high school years, I asked my coach why I wasn't playing more. And he said, because sometimes you're great and sometimes you're not very good. And he said, I need you to be consistent. So that is what I took, and I made that a part of my life from that point on, because everybody wants you to be consistent. I don't care if it's your spouse, your children, your family, your employees. Everyone needs to know what to expect from you all the time on a regular basis.
That's why companies like McDonald's and Coca-Cola have been so well, because they're consistent in their branding, they're consistent in their product, and that's what we have to be, is consistent. So pretexting is private investigators can be tough. A pretext is when you call a neighbor or you call someone and you basically give them a white lie. Again, you don't tell them the real reason why you're wanting the information. So in the United States with law enforcement, they have to be careful with these kind of things because it's called entrapment. Whereas a private investigator, we don't have to be as cautious about that, but you can't pretext a financial institution. So it's against the law to call a bank and say, I am John Smith and I want to know how much money is in my account. That's illegal. You cannot do those kind of things. So it's an ethical issue as well as a legal issue. But pretexting, according to the laws of the United States, is permissible as long as you don't ask for financial information or you do not pretext a financial institution. So it's basically used to get one party to give admissions or give information that they would not normally provide if you told them up front that you were an investigator. It's basically discovering the truth during a normal transaction, but not necessarily through trickery. So as private investigators, we always have issues that come up, such as the use of a GPS. Can you use a GPS? Each jurisdiction is different. So for instance, in the United States, some states allow you to have a GPS and to use the GPS. Some of them don't even speak to that issue. So it's not illegal or legal. They just don't speak to it in their laws. What we have found is the best way to handle that topic is to have a GPS authorization, which basically means that the person signs a document stating that they have a legal right to that vehicle and therefore have the legal right to give you permission to put a GPS on that vehicle. That's the smartest and the best way to handle it. And then we talk about drones. How do we handle drones in today's world? That's if you use it to spy on your neighbor or spy on someone else, that is a violation. In the United States, you can only use a drone for certain permits. And you have to file an FAA flight plan if you're going to use them anywhere near an airport or a metropolitan area. And so it's typically only done to view a crime scene, arson scene, something of that nature, accident scene. And it has this real limitations as to how you can use drones, because it's what they call the naked eye syndrome. In the United States, if you can walk down the street and you can see it with your naked eye, then you can video it. But you cannot, knock a board out of the fence. You can't climb up in a tree to look over a fence. That's an invasion of privacy and a trespass issue. So it's the same thought process with a drone. You can't go higher than the fence to see over the fence. So be cautious with that. Then we have what's called one-party and two-party states. So we had one of our political figures that would go to Washington, D.C. for political reasons, but he lived in Texas. He was married, but he had an affair, and it became public. Well, his girlfriend would call him when he was in Washington, D.C. Washington, D.C. is a two-party state, which means that two parties of the conversation has to know that it's being recorded. Texas is a one-party state. And I keep using Texas, by the way, because that's where I live and that's where I'm from. I'm licensed from Florida all the way across to California. So I'm licensed in most states. But in Texas, only one party of the conversation has to know it's being recorded. So she just assumed that when she was calling him that he was in Texas, or maybe she didn't know the law. But at any rate, she violated the law because
he was in Washington, D.C., which requires both parties to be aware of the conversation. And that wasn't the case. So a lot of times people trip up and get themselves in compromising situations because they don't know the law, or they know it and they don't care. Asset searches are always tough because you can find out whether or not someone has a business, if they own property, if they have a vehicle, a boat, or something of that nature. But a lot of times what clients will do is they'll call and say, I want to know how much money the person has in a bank account, or I want to know where they have bank accounts. There are legal ways to do that. If a business or an individual has a judgment against another party, then there are legal ways to do asset investigations and bank account searches. But again, in the United States, you cannot pretext a financial institution, so that you can get in violation of the law real quick doing those type of searches. And I know that in most other countries, privacy and access to records is less than it is in the United States. So we're pretty open with our information here to some degree, except when it comes to financial information. But most other countries, they have a lot more restrictions on that, and a lot of it's not even available. So it comes down to invasion of privacy and trespass. And I can tell you that one time I did an interview for a newspaper, and they asked me about doing electronic bug sweeps, TSCM sweeps. And I was very, very cautious. And I said, we find bugs, but we do not plant bugs. And I said that 3 times. Well, in the newspaper, they stated that we planted bugs and we found bugs, which is totally not right. And it's illegal to plant electronic listing devices without a warrant, and only law enforcement can get a warrant. So private investigators cannot plant listing devices. In that same article, they talked about a private investigator from California who made the comment, supposedly, that he loved to do surveillance at night, because what he would do is sneak up and drill a little bitty hole in the tail light of a car. And tail lights are typically red, so when the lights come on, there's a little beacon of white light in the middle of that red that he could follow from a distance. So I'm hoping that they misquoted him as well. But first thing he would have had to have done would be to trespass to get onto the property. Second thing would be to damage the property itself to drill a hole in that light. So a lot of problems with those kind of issues. We have what's called temporary restraining orders, or TROs. That's typically in a domestic case. It can be in cases involving businesses where there's a dispute, but it essentially is a temporary restraining order, such as a husband and wife separate. The wife will get a restraining order away for the husband because he supposedly is beating her up or mean to her or whatever. So that is a restraining order so that the husband cannot come within 1,000 yards or whatever the court says in the court document. So as private investigators, we are an extension of that restraining order. So if your client has a restraining order against you, you cannot do certain things that would intimidate or be in violation of that restraining order. One of the cases that we had here was Peggy Klink was stalked and finally murdered by her ex-boyfriend. And as it turns out, a private investigator was hired and used computer records to determine that she had moved to Turlock, New Mexico. And she was ultimately found through those records. The boyfriend ended up killing her. So be aware that when you release information to just anybody out there that you don't know, that could be alarming and cause physical complications. We have what's called the Rule 4.2 communication with a person represented by counsel. And it basically says that we are an extension of a lawyer, of an attorney. So if the lawyer cannot interfere with a client relationship, then we can't do that either. And so what will often happen in situations is we will be asked to go interview some people.
And during that conversation, they'll sometimes say, well, my attorney said, and you've got to stop and you say, wait, you said you have an attorney? Who is your attorney? And as soon as they say that they are represented in this matter, then you have to stop communication with them in reference to that topic. So if they say, yeah, I've got a business attorney, represents my business, but he's not representing me in reference to the topic that you're questioning them on, then it doesn't matter. You can question them. But once they say that I have an attorney related to the topic at hand, then ethically you have to stop communicating with them and questioning them. And then you have to hopefully get the name of their attorney, give it to your client, the attorney, so that they can communicate. So we can be in violation of ethical issues, not even knowing it sometimes. So 59% of employees expect company managers to cut corners to meet targets. 43% of respondents say that their company has an anti-bribery and anti-corruption policy, but they could not identify who they could report that to if they had a problem with impropriety. After the United States, Germany is often seen leading the way in anti-corruption enforcement. By the end of 2010, 71 entities and individuals had been sanctioned for foreign bribery in Germany, compared with 107 in the United States, 39 in Italy, and 5 in the UK. So we all have this problem. In the US, we have a lot of problems with counterfeit product. I don't care if it's a professional sports team or a business or whatever. And that's, where they make hats and T-shirts and everything else that they sell in violation of trademarks and copyright infringement laws. And so that's part of the issue. They know that they're doing it illegally, but they don't care. So again, there's so many different ways to violate ethics and the law. So leading business problems, human resource ethics, interactions between managers, business owners, and employees create numerous opportunities for breaches of ethics. Discrimination, sexual or ethnicity, gender-related issues. It just goes without saying. That's part of our community in business community now. You have to be so careful the way that you communicate and treat other individuals. Accounting ethics, it's okay, to fudge a little bit. It's like, I went out and did 3 hours of surveillance, but you know what? I'm going to bump that to 4 or 4.5. No one will really know. So those little things right there, once you start bumping it or cheating a little bit, then it's easier to be dishonest the next time. So if you have a policy of ethics and you stick to them, then you cannot be questioned going forward. Theft and fraud, business owners or employees can commit breaches of ethics on an individual basis rather than on behalf of a company. The early 21st century had a string of long-running Ponzi scams. I'm sure y'all have the same issue. We have what's called the Nigerian scams, and there's been offshoots of that. And now the big thing is, they'll call up and say, if you don't pay this fine within close of business today, we're going to come and arrest you. And they'll make you or want you to pay it using cards, like Visa cards or gift cards. And it's because it's not traceable, or it's harder to trace. And so those kind of things right there, they go after the gullible. And so we're doing a lot of investigations related to that topic now, trying to help people once they've been violated. So ethical guidelines, justice, it comes simply down to treating other people the way that you want to be treated in all times and in all transactions, business and personal. Mutual respect, it's the golden rule, do unto others as you would have them do unto you. And stewardship is take care of your industry. We as private investigators, we have to take care of our industry. And because you're here at this conference and getting education, I'm preaching to the choir, so to speak. You're already here, you're already a professional, but we have to make sure that those people that are not ethical
that they don't damage our industry, because we're all going to suffer if that happens. And then honesty in thoughts, words, and actions between people. So, it's just simple being courteous to one another, and not taking advantage. Life is tough enough without having to worry about people scamming you. So we as private investigators, we are a tool of justice. We bring justice to those who cannot get it any other way. So if they cannot rely upon us to bring justice, then where are we headed? We have to educate our clients, we have to be fair with them, and we have to respect them. So, as I mentioned earlier, I'm the founder of the Coalition of Association Leaders. I started that because I've been in leadership in organizations for so long. And when I stepped down from being the president of the Texas Association of Licensed Investigators, I realized that there's a gap, because in most associations, the leadership changes every 2 years. And the history behind why you do things certain ways often leaves with them. So I started this so that all leaders could come together and we could help benefit our association going forward. I founded the Association of Christian Investigators. We have about 2,000 members in 23 countries, mainly because in 1997, I'd been a speaker at a conference, and afterwards, the head of that organization asked me, he said, "What do you think is one of the biggest problems with our industry?" And I said, "Ethics." And I said, "It's not necessarily ethics in itself, it's the perception of our ethics." And I said, a lot of times the TV shows and movies depicts us as being, former law enforcement officers that got kicked off of the police department, and they were alcoholics, whatever the case may be. I said, we need to make sure that we show ethics in everything that we do. And so he kind of encouraged me to start the association, and I did. So that was one of the main reasons behind that, where people of like faith can share without being concerned, and we help promote one another and help promote the industry. So I want to thank y'all for for being professionals. These are some of the websites that I have. PI Institute of Training, I mentioned that before. It's piinstitute.com. If you want additional training, excuse me. I appreciate the opportunity to have been here. Hopefully we'll be able to see one another in person again in the near future. I travel all over to associations and the different meetings. So hopefully we'll see one another in person. In the meantime, I hope that you and your families are safe and enjoy a prosperous and safe new year. I'm hoping 2022 is going to be good for all of us. So thank you all. Thank you again for giving me the opportunity to be here and present this. Hope you found it enjoyable. Thank you so much. Thank you for your good wishes. And that was a very, very exhaustive presentation on the respective subject that you presented. Thank you, Mr. Kelly, for connecting with us today. Ladies and gentlemen, we would now be hearing on training to sharpen investigating skills, and this will be presented to us by Shri C. Pal Singh, former Inspector General of Police and Honorary Director General. Ladies and gentlemen, please put your hands together as we welcome Shri C. Pal Singh, please. Good afternoon, everyone. The chief guest, Shri Karnail Singh Ji, the chairman, Kamal Vikram Singh, all other distinguished guests, ladies and gentlemen. You may be knowing that I moved away from Delhi to Chandigarh about a year and a half back.
the last summit, CAPSI summit, and probably first for me that I have not attended. I have been attending all the other summits. It's only the 16th summit I could not. So I was itching to be here. And lo and behold, day before yesterday, Governor Vikram Singh ji gave me a call. And he said, you must come. And despite some personal discomforts, and also the time was very short, he gave a ring, and next day evening I had to book the flight. So what I like to refer in personal touch, that he is so affectionate and so emphatic at the same time that you cannot say no. He says, I know you have a dental problem, you didn't attend the summit, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे गन्ने चूसने के लिए नहीं बुलाना. तो दांतों की बात नहीं है, आपको आना ही पड़ेगा. I said, certainly, if you say like that, I'll come. With these words, the subject to the heart of the chairman is always training. For the last about 16 years, ever since I've been associated with CAPSI and APDI, every time we have been meeting in a core group, he has been talking of training, either training of the security personnel or training of the detectives. And this presentation, which I am going to give, I jotted out day before yesterday hurriedly and then sent it to Rinku that you can give some slides like that. My submission is that these are only thought processes of Governor Vikram Singh ji, mingled with my thought process and some other people of the core group. And this is all combined and made into the slides, what we have been thinking all along. The sharpening, that is, that first of all, question is training is as important as anyone can say. And particularly, I like to tell you that inadvertently and advertently, the chairman today said, Association of Professional Security, Association of Professional Security and Detectives and Investigators. Association of private, not private, Association of Professionally used word. So it was advertently or inadvertently, but he used the word professional. So professionalism can come only through good training. And unless you are trained well, you can't have. And I have told you this is all conglomeration or amalgam of various qualities, which we have laid down either in the National Occupation Standard of Investigators, or at times we discussed with other and we gave some replies to the cabinet committee and the committee which was constituted the government for Padara. The investigator is the man on the ground. And basic knowledge of legal provisions of the private investigator is a must. Curiosity to go to micro level detail also should be there in him. And ability and eagle eye to conduct inquiries and investigation at the spot. Then ability to verify the facts for achieving the purpose. Now, how to go about next? There are, next slide, please. Ways and means, I'm shorten it, that spot inquiries, interview, surveys, everything is there for a private investigation. And I'll take you back to Padara. Padara was under consideration of the government, as he has told you in the opening address, for the last many years, and ultimately lapsed. And they said, the chairman of the Rajya Sabha said that all bills which are overdue, have been pending, have not enacted into law, they'll be considered as lapsed. And the reasons are many more, which of course Kamar Saab has dilated at length. Now, draft report of the governing committee of the government was sent to the chairman, APDI, and we sat down and we wrote down our comments and gave it back to the government. Our comments of the core committee, where Kamar Saab was all the time present when we were considering it, each and every word which we wrote back, he was present there. The restriction, there was such a restriction in Padara. The restriction contained in government committee report
were analyzed by us. The private investigators perform their duties, we said, within the ambit of law. And all the laws of the country, like IPC, CRPC, etc., are applicable to the private investigator as they're applicable to everyone. Our profession should be left, we said, as self-regulated to some extent, like the profession of advocates, CAs, and engineers. Then we also said the national occupation standards have been framed by the then SSDC and duly approved by the National Development Council. And therefore, our investigators are being prepared accordingly. We also said that this mandate of the National Skill Development Corporation has been accepted by the government. Then we went on. There were certain other issues. We went into those issues also. Details of response which we gave to MHA also included that our association, that is APDI, is an investigation, it is an association which was registered somewhere in 2006 and has the conduct rule. We attached the conduct rule also in our response of 2007, which also incorporate the code of ethics. You were mentioning just now ethics when the last meet. We said this code of ethics is contained in there because they had some doubts about the ethical quality of the investigators in their report. And we said, no, we have a code of conduct, and this is our code of conduct, a code of ethics. We said perform their duties within the bounds of law. So there's no question of they said they should do this, they are not doing that. We said, no, they perform their duties within the bounds of law as all laws are applicable to her. And we are making them professional in terms of NOS, which are by and large covering all these laws. Respect for the right of the client. Just now, Kamar Saab mentioned in the beginning, and I'm telling you, he touched most of the point which I will be referring. He said that all the privacy of an individual is not to be impinged, and the right of privacy has to be respected. This also we replied. Then we said the training to private investigator is done or would be done as per national occupation standards. Next. Give the next slide. Now, when we said national occupation standard, I'd like to dilate little on the national occupation. As you know, I was deeply associated. There was a committee constituted by chairman for national occupation standard, and we had gone into detail before they were approved and ultimately published. Now, national occupations include the following important objectives. Observance of various conduct rules, very important because they were doubting in that report about the conduct and ethics of the private investigators. We said we are written in the NOS itself, the observance of various conducts and rules and codes of ethics will be observed. We also said that requirement of managing operation, risk management, identifying threats, and assessing the gravity of the situation have also been included in our NOS. We also said that we understand when we send an investigator, the plan of his operation, his investigation skill, prepare him for this task before we assign him. We also said how to carry out the search from open sources, research, open social media. We have mentioned that social media also is consulted, and first before they go, they conduct research from the open media. That is open sources. Then the methodology of conducting interviews, undertaking surveys, and collection of information have also been dilated upon. How to submit report even to the seniors has been laid down. So all these things are laid down. I'll now come to particular next slide. Now, out of these NOS, there are two NOS very important. That is NOS 4. NOS 4 lays down the qualification packs, which underlines the unique set of function and standards for this profession. We also said it lays down the performance criteria also.
It lays down the knowledge of some legislation. It lays down the understanding, capabilities, and skill of an individual. We also said there's also laid down the knowledge of legislation and regulation operating in the country, which can impact the investigation. Next, there's hardly any time, I just quickly finish. The important legislation which are included in this national occupation standard covered the right to privacy, trespassing, securing of evidence, tampering with evidence, right to arrest, right of private defense, right to information, relevant section of Arms Act, Trademark Act, Copyright Act, and Evidence Act, as well as RTI. I am not taking a word from myself. It is all I have taken from the National Occupation Standard, which we framed, which committee chairman and constituted, I'm a member of the committee. This is included in all those National Occupation Standards. We said we will train them. Knowledge of equipment like cameras, binoculars, CCTVs, voice recorders, smartphones, GPS, etc. Also, the communication skill individual should have. And also, he should be having the writing skill so that the decision by the senior officer can be made on that. After that, next is another important NOS, that is NOS 6. NOS 6 prescribes the methodology and techniques of carrying out the investigation. It says to carry out interviews, use of audio-video and smartphone within the legal parameters. Next, the importance of taking interviews, consent of the individual to be interviewed, and as per legal requirement, then you conduct the interview. Then we also laid down, I'm not going to all the 7 NOS, I've only taken basically 2 which are important. Assessment of the guidelines. Assessment and guidelines are also given. That is both assessment for theory as well as practical. This assessment is precise. Score of minimum 70% in every NOS. Gentlemen, please try to note this. 70% for every NOS. We have 7 NOS. And assessment says that 70% marks is to be obtained for every NOS. It can undertake, here I'd like to refer to Karnail Singh Saab. He said that you have modules, and that module you should train, just like he mentioned about frauds and all. And he says we should train and create very nice. But the NOS says that it is not necessary that in one go you are able to conduct an examination and assessment. You may go by NOS, and you can qualify in that NOS. So periodic examination and assessment can be held. Neither the qualification packs have been thoroughly explained, unfortunately. I'm confessing it to our investigators, nor any assessment has so far been conducted. This is what has been laid down. Now, need of complying with our assurances. When we gave under Padara certain assurances in writing to the government, as well as when we laid down in the NOS, there is a need that the chairman and his committee, on behalf of APDI, has given certain assurances to the government in writing. And it is also said that these are the NOS we will follow. Now, the assurance given, I refer particularly, the laws of the land already prevalent should be well known to us. Otherwise, we have said they are known to us. We have written to them, but that they are known to us. We read down NOS should be known. And if our investigators do not know what are the laws on land, naturally is not a professional, then need of adhering to the code of conduct. Now, this is a great doubt. All the government agencies emphasize that so-and-so investigator, that you know very well, I have not go to detail, papers came, this is not followed, though so-and-so has not followed code of conduct, which create a very bad image. So we said, no, we have a code of conduct. We already have a code of conduct, which is applicable to all our APDI people. So why not we know what are the code of conduct, what we have to observe. Now, proper knowledge of prevalent law,
and to follow professional standard as per NOS. This has some assurance we have given, and we must carry out the assurance. Now, again, the third point next. Yes, thank you. Now, thinking all this thing, the chairman has been deliberating and talking to me, talking to the court. We must see Paul start some training. We must start some training. And he started that let us start training, so-called refresher training or RPL, recognition of prior learning. Already, your investigator is there for about 2 years, 3 years, and we know certain knowledge. Recognizing that, condensed some subject, he said, and he constituted a committee for the RPL under my chairmanship. And we went into details. And this committee, on the basis of decision taken by the core committee under chairman, decided to start short duration courses. Syllabus committee, which was constituted, the committee recommended the knowledge of important topics as per NOS. I'm telling you basically, we have taken out this subject from NOS. Then knowledge of more certain subjects, in addition to the subjects which are already included, in addition to the certain legal requirement where proper words are indicated in the NOS. We said certain more important things are also there, which have somehow not been included in the NOS training. That is, we said, what is the circumstantial evidence, the modus operandi, and appreciation of evidence question, and the criteria of probability, law of probability. All these things before you frame an investigative report, you should know these things, and we have indicated in our RPL training. Then duration of training also we have indicated for RPL. Next. Places of training, whether it's virtual or it should be physical. Qualification marks also, for the RPL I'm talking. Then assessment and method of certification. Then the reading material. I have laid down at depth what reading material they should care. I have also said in that a compendium should be prepared so that this handy compendium can be immediately referred by the investigator. Knowledge of some specific section provisions as per chapter 23 of the book of private investigator. This was written by Mr. V.M. Panda, and I glanced through it. I've written the foreword of this book. So I said that chapter 23 is very important as far as private investigators are concerned. And this particular, you'll be surprised to know, this book also has fine reference in the recommendation or in the syllabus we gave to Noida International University and other universities where we intend to conduct courses. This particular book we recommended there also. Some provision of Dowry Prohibition Act and Indian Evidence Act. So these were the recommendations of the subcommittee, which was constituted a technical committee for RPL. Now, what is the way forward? Way forward is the efforts to start RPL or so-called refresher training remained in abeyance, either due to onset of COVID or due to some lukewarm attitude of some of my colleagues in the syllabus committee or the training committee or the RPL committee, or lacking of enthusiasm on the part of our friends, investigators. There is a view now to start training of investigation under the RRU. Now this is the idea I'm trying to tell, how the core group of APDI thinks about the APDI, how it is thought in his office. In case you are not able to do RPL, all right, we have given RPL, we'll give you RPL. But there is now RRU have come, that is a full-fledged institution. They'll give you certification. So we should have some training course for the investigator for RAI. We can consider, I feel, imparting full training containing all the qualification laid down in the qualification packs, etc., of NOS, plus some other subject, as far as RR is concerned, Riksha University. As far as other is concerned, RPL we have laid down. Now, these are way forward, and I think the training is a must. And I feel that be proactive on your career path, gentlemen. We are being always reactive. We give some idea, some people follow, some people don't follow. Please be proactive in your career path. Hone up your talents by training. You must hone up your talents by training.
grow professionally and also personally by this training. By training, you refine your skills, and not only refine your skill, broaden your horizon, but your sharpened skill also boost up your production. Production in the sense, it also boost up your own company. If you are professional certified, if you are sharp enough, you are boosting up the production, you're boosting up the investment of the company. So I am of the view that sharpening the skill of your investigator, either through RPL or through RR or whatever you otherwise think, or certain module as today suggested by Shri Karnail Singh Ji, is most important. I beseech you all that kindly look into it in your own interest and sharpen the skills of your investigators. Thank you very much. Thank you so much, sir, for that wonderful address and for sharing your thoughts with us today and for encouraging us with such motivational words. Ladies and gentlemen, before we formally propose the vote of thanks, इससे पहले कि धन्यवाद प्रस्ताव हम प्रस्तुत करें, दो मेमेंटोस हैं जो हम निवेदन करेंगे कुंवर विक्रम सिंह जी से. Chairman is kindly requested to please present mementos as tokens of appreciation and respect for, firstly, our chief guest. सबसे पहले हमारे जो chief guest हैं श्री करनैल सिंह जी, उनका बहुत-बहुत हम धन्यवाद करते हैं और एक memento के साथ a token of appreciation and respect from our side, APDI की ओर से ये एक खूबसूरत सा memento, एक बार जोरदार तालियां. And also to Shri C. Pal Singh Ji. So we have another memento, and this one goes out for Shri C. Pal Singh. A token of respect and appreciation. Thank you for joining us today, sir. Now we formally will propose the vote of thanks, and this will be done by Shri Mahesh Sharma, Secretary General. Mahesh Ji, can I please request you to present the vote of thanks? Hello. आदरणीय चेयरमैन सर एंड हमारे चीफ गेस्ट श्री कर्नैल सिंह जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मुझे डीसीपी एल.एन. राव साहब ने बताया था कि आज का दिन आपका थोड़ा व्यस्त था और पहले असमर्थता प्रकट की थी, लेकिन बाद में आपने हाँ की. इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. आपने जिस प्रकार के अपने विचार व्यक्त किए और सबको एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, नए इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, इट्स वेरी लर्निंग फॉर अस. मैं अपने सभी अवार्डीज, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड और बेस्ट इन्वेस्टिगेशन अवार्ड, बेस्ट कोऑपरेट इन्वेस्टिगेटर, बेस्ट यंग इन्वेस्टिगेशन एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टिगेशन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ. स्पेशली जब मुझे चेयरमैन साहब ने आपके सूर्यकांत जी के बारे में बताया, तो ये एक इतना लर्निंग प्रोसेस है जिसको सभी को इससे एक सीख लेनी चाहिए कि उनके ऊपर जो आपदा विपती उसको उन्होंने प्रोफेशन में बदल दिया और अपनी कंपनी ओपन कर ली और लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करते हैं.
मैं उनको बहुत बहुत बधाई। चेयरमैन साहब, आपकी परमिशन से मैं 2 मिनट का आपका वीडियो दिखाना चाहूंगा श्रीकांत जी का, प्लीज। श्रीकांत। थैंक यू श्रीकांत जी। ये स्पाई संकेत नहीं है, ये हम सबके लिए संकेत है कि हम आपसे प्रेरणा लें। थैंक यू वेरी मच। कोविड के दौरान जितना काम हमारे चेयरमैन साहब ने, क्योंकि मेरी उनसे रोज ही बात होती थी, जो पर्दे के पीछे काम होते हैं शायद आप सोच नहीं सकते। चेयरमैन साहब हर वक्त एक चीज सोचते हैं, चाहे वो कैप्सी हो या एपीडीआई, कि मैं इस प्रोफेशन को, मैं इस एसोसिएशन को कहां ले जाऊं। ये तो आपको सबको विदित है, चाहे WAD हो, चाहे CII हो, और भी बड़े बड़े इंटरनेशनल जो स्टेजेस हैं, एसोसिएशंस हैं, उसमें सबसे ज्यादा नाम APDI का है, कैप्सी से भी ज्यादा। दिस आई वांट टू टेल यू। उसी का नतीजा है कि आपके इस फोरम पे वैड के चेयरमैन, वैड के प्रेसिडेंट, सभी लोग अपना भाषण अपने को एड्रेस करते हैं, आपको करते हैं और अपना गर्व महसूस करते हैं। इवन डॉन रोसू तो हमारे APDI के ऑफिस में आए थे, वो हमारे मेहमान थे 5 दिन के लिए। ऐसे कोई नहीं आता है। किस एसोसिएशन को बुलाता है कोई? आप सब यहां बैठे हैं तो इसके पीछे एक तपस्या है। चेयरमैन साहब का विजन, उनकी सोचने की क्षमता हम सोच भी नहीं सकते। ये एक बैज ऑफ ऑनर है। ये देखिए, मैं जानबूझ के लगा के लाया था आज। ये बैज ऑफ ऑनर कैप्सी ने दिया था। किस काम के लिए दिया था? जिन्होंने कोविड में काम किया था, फ्रंट वॉरियर्स, उन सबको दिया था। उन सब कैप्सी के प्रबंधकों को दिया था। उन सब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स को दिया था, दैट इज एंड यूजर्स। इसका परिणाम इतना हुआ कि प्रिंसिपल जो हमारे ओनर्स हैं, एंड यूजर्स हैं, उनको समझ में आया कि सिक्योरिटी में कोई संस्था है। ये सिक्योरिटी गार्ड ऐसे ही नहीं बने, इनके पीछे साहब का दिमाग, विजन, मिशन है। इसीलिए हम इतने आगे पहुंच चुके हैं। अगर प्रधानमंत्री भी अपने आप को चौकीदार कहने लगा, कर्नल साहब मैं चौकीदार, और जब उनने चौकीदार कहा तो उनकी पूरी कैबिनेट ने कहा मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। आज दुनिया में चौकीदार हो गए। कैसे? ये सोच है। होम मिनिस्टर भी हमारे यहाँ आए थे। उन्होंने कहा
सिक्योरिटी गार्ड इज द फर्स्ट फ्रंट लाइन वॉरियर, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कोविड में जितने कोरोना पेशेंट थे उनको पहले उन्होंने फेस किया, पीछे नहीं हटा। आप लोगों के बहुत से रिश्तेदार होंगे, मैं कहना चाहता हूं, इवन हस्बैंड वाइफ, अगर वाइफ को कोरोना हो गया तो हस्बैंड ने कभी छूना मत, दूर रहो। इवन डेड बॉडी को भी नहीं छुआ। हमारे वर्कर बीच में जाके, उन कंपार्टमेंट में जाके उनको दवाई नहीं दी, बल्कि उनको पूरा पूरा बताया गया कि तुमको क्या क्या करना चाहिए। और कितने लोगों ने बलिदान भी दिया। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, एपीडीआई के हमारे बहुत सदस्यों ने कोविड में भी बहुत काम किया। जो फेक प्रोडक्ट की बात चेयरमैन साहब ने करी थी, ये बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के संज्ञान में डाली गई, उन्होंने इस पे एक्शन भी लिया। अब वो काम कुछ बड़े लोगों पे भी गया, ऐसा नहीं है, कुछ बड़े लोगों पे भी गया, सर पुलिस अधिकारियों पे भी गया जो रिटायर्ड हैं, मेरी नॉलेज में, क्योंकि वो मेरे भी मित्र हैं। तो कम से कम काम तो हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो मेरा यही है कि जितने हमारे इन्वेस्टिगेटर्स हैं अपने आप को इंटरनेशनल माइंड में बिठा लें, और जब भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो उसको अटेंड करें। जब यहां पर इतना सीखने का ज्ञान तुम्हें मिल सकता है तो वहां तो ज्ञान का भंडार है, समुद्र है। हालांकि बहुत मैं एक बात बताना चाहता हूं, चेयरमैन साहब जब प्रेसिडेंट थे वेड के, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स, ही वाज सिटिंग ऑन द डाइस, और वहां पर 2 इंडियन और बैठे हुए थे, शायद आरपी चौहान साहब बैठे थे और एक सज्जन और थे, अजीत सिंह। तो चेयरमैन साहब ने कहा, मैं इस डाइस पर पूरे इंडियन देखना चाहता हूं और उससे वो फिरंगी घबरा गए उन्होंने रूल चेंज कर दिया कि 4 से ज्यादा डायरेक्टर नहीं बनेंगे एक कंट्री के। कहीं ऐसा ना हो कि सारे डायरेक्टर भी इनके, पदाधिकारी भी इनके, और हम पे कब्जा ना कर लें। लेकिन कम से कम आप जा तो सकते हैं। सबसे, मैं डॉक्टर त्यागी यहाँ बैठे हुए हैं, गुजरात के लोग हैं, गुजरात के लोगों ने सबने वीजा लगवाया, क्योंकि वीजा लग जाता है बहुत जल्दी। तो गुजरात सबसे अग्रणी है इसमें, और अकेले नहीं जाते, अपनी वाइफ्स को भी साथ में ले जाते हैं, पूरा घुमाते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, लंदन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी कॉन्फ्रेंस होती है, पूरा गुजरात का एक कंपार्टमेंट फुल चलता है। तो ऐसे ही मैं अपने सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें और देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाएं। ये हमारे रियली गौरव की बात है कि इंडिया का अगर कोई दल जाता है तो वो सामने देखता है कि ये इंडिया से आए हुए। वैसे तो हम दूर से ही लग जाते हैं कि हम इंडियन है, बातों से ही लग जाते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया का मान सम्मान बढ़ा है देश के अंदर, हमने खुद देखा है। इसके साथ हेलो, मैं एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी एसोसिएशन के लिए गांधी जी को हम याद करते हैं। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना गांधी जी के नोट के कुछ नहीं चलता है और चलेगा भी नहीं। पैसा देने के लिए लोग अपने नोट निकालते हैं, देना है भिखारी को 50 निकल आता है, 500 को फिर अंदर रख लेता है, ये तो बहुत ज्यादा है। 10 का नोट निकालने में उसे देखना पड़ता है मैं कौन सा नोट दूं। तो मैं उन स्पॉन्सर्स को जिन्होंने इस इवेंट को स्पॉन्सर किया, सर, प्लेटिनियम, गोल्ड, सिल्वर, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके कारण एसोसिएशन चलती है, इसमें कंजूसी न करें।
क्योंकि शादी ब्याह में आप कंजूसी नहीं करते। 1000 डिश लगा देते हैं खाने की, क्योंकि आपको दिखाना है कि मैं इतना बड़ा आदमी को देखो कितना खाने का सामान है, कितनी सजावट है। भिन्न भिन्न प्रकार के पेयजल भी होते हैं वहां पे। तो उसमें अभी लंच में 5 मिनट है ना सर, इसलिए मुझे टाइम लेना ही है। मैं बाहर जाके कंफर्म करके फिर ही आता हूँ। तो वो फिर वहां जाके खड़े होना ठीक नहीं है। तो ये बात अपनों से कर रहे हैं, बाहर से नहीं कर रहे, तो इसलिए इस काम में अपना सहयोग दें और आगे भी देते रहें। मैं अपने जो इस इवेंट को एक्चुअली ऑर्गेनाइज, मेरा फेस हो सकता है, चेयरमैन साहब का फेस हो सकता है, लेकिन इसके काम करने के लिए पीछे बहुत लोग हैं। जो जब फिल्म बनती है तो हम तो हीरो हीरोइन को जानते हैं, ऐसा नहीं है। उसके पीछे जितने कलाकार हैं, जितने फोटोग्राफर्स हैं, काम करने वाले हैं, उन सबका भी, जहाँ हमारी जो रिंकू मैडम बैठी हैं, रिंकू लामा, शी वर्कड वेरी हार्ड ऑलवेज इन कैप्सी एंड एपीडीआई, बहुत बहुत मेहनत करती हैं। मैं उनका धन्यवाद देता हूं। हमारे ऑफिस के यहाँ शौमी शर्मा, नरेंद्र कुमार, मनोज, प्लीज उनके लिए जरा वेलकम करें। प्रेम, केवल, हमारे अजीत जी, हमारे प्रेसिडेंट महोदय दिल्ली के, ये सब ने बड़ी मेहनत की है। इन्होंने बड़ी अपने वेबिनार भी किए हैं, हर साल किए हैं, और रिजल्ट भी आया ही है। मैं ये नहीं कहूँगा रिजल्ट नहीं आया, बिल्कुल रिजल्ट आया है। थैंक्स टू जो हमारे ऑनलाइन बैठे हुए हैं, हमारे मेंबर्स, हमारे बड़े बड़े सीनियर्स, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो कंटिन्यूस हमको वॉच कर रहे हैं, हमको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। स्पेशली जो हमारे आरआरयू से नरेंद्र जी आए हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। स्पेशली आपके वाइस चांसलर जी का, पटेल साहब का, जिन्होंने आपको यहाँ पर आरआरयू के बिहाफ पर भेजा। थैंक यू वेरी मच सर। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी व्यक्ति इसको, जितने भी मेंबर्स, ऑनरेबल डिजिटल डिग्निटरीज बैठे हुए हैं और देख रहे हैं। इसके अलावा सर, थैंक्स टू आवर नेटफ्लिक्स और अदर मीडिया जिन्होंने इसको पूरा कवर किया। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जब आप इसको प्रोग्राम को दिखाएं, अगर आप चेयरमैन साहब को शेयर कर सकते हैं किस किस दिन क्या आ रहा है, तो हम इसको ऑल इंडिया बेसिस पर अपना व्हाट्सएप मैसेज दे सकते हैं कि इसको आप देखें, तो आपकी टीआरपी भी बढ़ सकती है। ऐसी बात नहीं है, इसमें आप इसको कर सकते हैं। हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है, कैप्सी में भी 90 लाख लोग हैं, तो 90 लाख टीआरपी से आप समझ सकते हो आप कहाँ से कहाँ नंबर 1 पहुँच सकते हैं। So and thanks to Mr. VAD Chairman Dan Rasuji, President Mr. Alexi, and APDI के श्री सुभाष बधावन जी को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। एंड डीसीपी एल एन राव किसी वजह से इसको ज्वाइन नहीं कर पाए, उनका मैसेज मेरे पास आया था, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली कि हमारे चीफ गेस्ट को यहाँ तक लेकर आए, स्पेशली उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आवर एंकर जूही मल्होत्रा, खड़े हो जाओ भाई, जूही मल्होत्रा, जो पिछले 8-10 साल से कैप्सी और एपीडीआई का फंक्शन कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं है, ऐसा ही करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर यू ऑल्सो, थैंक यू सो मच। तो हो गया, लेकिन मैं पर्सनली जो नेटफ्लिक्स की टीम आई हुई यहाँ से, बॉम्बे से जहाँ पधारे सारे, उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में भाव्या दोरे हैं। Where is that young lady? Bhavya. No, just stand. People should know. He is a journalist who in the writing of this thing. We have Mr. Ashok, who is the director of. Sabine is the main person who is organizing the whole team of 10-15 people. Thank you very much. Thank you very much for covering, and thank you very much for bringing this wonderful subject in the knowledge of the people. I'm sure your movie making will take a lot of it. Thank you very much. So nice. Thank you.
Ladies and gentlemen, with this, we come to the close of Annual National Conference 2021 of APDI. Thanks to all the dignitaries, our chief guest, all dignitaries seated on the dais, and all friends and the audience members. We congratulate all the winners, all the awardees for presenting exemplary work, and we hope and pray that the others also take motivation from this, and we all continue to rise together. We congratulate the members of the management, the chairman, sir, president, secretary general, general secretary, and the other members. Ladies and gentlemen, before we invite everyone for lunch, may we request everyone to kindly rise for the national anthem, please. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय जय हे भारत माता की Jai. Thank you very much. Please join us for lunch and good wishes until we meet the next time. Thank you so much, ladies and gentlemen, for joining us.